Assalamu alaikum, everyone. I welcome you all to this online discussion organized by the PEP Foundation and the Impact Network. As you all are aware, that today's discussion is all about building the startup finance value chain. Before I formally introduce our panelists, let me first thank our audience for the overwhelming response. I'm really elated to see a huge number of registrations, and you people also sent in your queries, which we will be addressing towards the end of the session. Now, coming towards our esteemed panelists, I'll just start off in alphabetical order. And first of all, we have with us Ms. Humaira Sajjad. Ms. Humaira is a program manager incubation at National Science and Technology Park for its Hatchet program. She engages in taking nascent enterprises found by student startups from idea validation to becoming a validated business model during the program. She also delivers capacity building sessions on innovation management, business canvas models, and the basics of entrepreneurship. Thank you very much, Humaira, for your time. Thank you for having me. Our next guest is Mr. Muhammad Ali Qasim, who will join us shortly. Ali is basically a social entrepreneurship expert and a consultant to many international and national organizations in Pakistan. Ali is also managing the business innovation and development aspects of various startups at Bahria Innovation Center at its innovation lead. Besides that, Ali is a mentor, trainer, and consultant for PAK W2E2, Pakistan Wireless Women Entrepreneurship and Empowerment, and WIRE, which is a Women in Renewable Energy and Seed organization, which is an initiative of the Prince Charles Trust to promote entrepreneurship amongst the women and young leaders of tomorrow. Ali is also spearheading two programs named Pehchan and Nai Soch at Bahria Innovation Center with the aim to promote women empowerment and economic development through entrepreneurship. Our third guest for today is Dr. Qasim Siddiqui. Dr. Siddiqui is an experienced textile engineer with a demonstrated history of working in the textiles industry. He's the founder of the National Fiber Company, which provides banana fiber and yarn extracted from wasted banana stems to textile companies seeking for sustainable replacements for synthetic fiber. Thank you very much, Dr. Siddiqui, for being here with us. Next up, we have Syed Mohsin Shayan Yar. Shayan has been a part of the startup ecosystem for many years and has experienced both sides of the table as an entrepreneur and enabler. He is currently serving a vibrant community of startups at the National Incubation Center Islamabad and YouTube Accelerator by helping them raise investments and build strategic partnerships. Shayan has a special interest in climate tech and clean tech and has led startups in this area and continues to advise them through multiple forums. Thank you very much, Shayan, for your presence. And Thank our you, fifth Anum. guest, Really glad to be here. pleasure to have you here. And our fifth guest for today's discussion is Syed Nisar Ahmed. Mr. Nisar is the co-founder and the additional director of National Incubation Center Quetta, which happens to be the only business incubator in Balochistan, which has successfully graduated 188 startups and 58 micro enterprises so far. Mr. Nisar has also worked as consultant with the World Bank and has raised more than rupees 700 million in funding so far for various projects at the university. I welcome all the participants to our today's discussion, and I really look forward to an enthralling and enlightening discussion today. I'll quickly start off with my set of questions, and then towards the end of the session, we'll address the questions sent in by the audiences. And my first question would be from Shayan and Ms. Humaira. Since you two work in a bit different capacities, I would like to ask you that how do we determine a startup's financing stage? Is there a benchmarking system that we use to do so? And Humaira, since you primarily work with the student-led startups at university level, is the process any different? If you could walk us through the process one by one. Over to you, Shayan, and then Ms. Humaira would answer the question. Thank you. Sure. So what happens is normally when we are taking in startups or considering startups for our incubation program, we open an application process, and this just requires, there is no requirement for you to have a particular educational background or a professional background or even experience as a founder before this. You just need to come in and let us know what kind of a problem is it that you are trying to solve, how big of a problem it is. So for example, do some research and let us know what is the extent of the problem that you're trying to solve so that we know what is the market that you are trying to capture.
Then is the solution and how much traction you have built on that solution. So we might have different hypotheses as a result of a problem that we are considering. But if we are not really able to take it to the user, we will not know whether this solution is working or not. So these are the determinants. And then finally, there's just the one where we look at the team and see the capability, if they're capable enough to implement the solution that they are trying to implement. These are the four major considerations when we are trying to take in the startups. Over to you, Humaira. I think we've lost Humaira. Looks like it. Yes, I cannot see her Yes, here. In yes. Okay, anyways, we can perhaps discuss this question again, revisit it once she joins back. Now, Dr. Qasim and Mr. Nisar, my next question is from you two. If you could talk us a bit about the different financing sources that are available for startups. And since Shayan talked about a bit about the stages, are these financing sources a bit different for each stage? And Mr. Qasim, since you have the first-hand experience of running a startup, how has your experience been? If you could talk us, tell us a bit about your experience in terms of the funding and financing sources. If Mr. Nisar could first answer the question, and then Mr. Qasim would take it from there. Bismillahirrahmanirrahim. We're glad to be here. Financing key sources, there are a number of sources. There are a number of grants that are available for the seed stage startups. Ignite is providing some grants as well from the platform of National Incubation Centers. We have grants from HEC. It's named as Innovator Seed Fund, the cap of which is about $35,000. And those are for the late stage startups. And we've got USAID SME grants as well, the cap of which is around 30 million rupees. They're also for the startups who have already validated their products in the market, who are already in sales, and they who can show some traction, who has got some traction can apply for those grants and can avail those. Apart from that, there are angel investors. So then we have got startups look for Series A funding and then B funding, and then the later stages when startups are, and when they become businesses and companies, they can go for an IPO. Now, आपके जो second part of question था कि different stages के लिए financing different के sources different हैं, तो yes. Shayan ने जैसे mention किया कि जब हम NICs में startups को incubate करते हैं, तो it's more or less the same criteria that we follow here as well. They're at the seed stage. So stage पे they need seed funding to test out their products in the market, to see whether their solution is working or not, whether users are positive towards that or not. Once that's done and they can show some traction, they've got an established ROI, they can go for Series A funding to establish their teams and infrastructure. And then once that's done and they show organic growth, they can go for Series B funding, and then the later stages, they become big companies and they can go for an IPO. Thank you, Mr. Nisar. Dr. Qasim, if you could answer the same question in the light of your own experience. Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Anum, for having me on your, this wonderful forum for discussion. और मैं थोड़ी सी बात करूंगा सबसे पहले तो स्टार्टअप इकोसिस्टम के हवाले से कि वो कौन-कौन से चैलेंजेस हैं जो इस वक्त स्टार्टअप्स को फेस कर रहे हैं स्टार्टअप्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इन्वेस्टमेंट्स. तो सबसे पहले जो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड विद द स्टार्टअप्स इज योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो दैट you have establish a foundation and a strong, you have tested your idea with your own money and with your friends and family fundings. तो आप जब वो एक establish कर लेते हैं, एक base establish कर लेते हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि हमारा idea इस काबिल है कि जिसने कुछ certain customer base को catch कर लिया है और उसमें इतनी innovation है कि जो इनोवेशन जो है वो एक सेल्स जनरेट करने के काबिल है. उसके बाद जो सबसे पहली चीज इस वक्त कोई भी स्टार्टअप जो है वो देखने लगता है वो ऑफ कोर्स
ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन सॉफ्ट हो, और इतना ज्यादा प्रेशर खासतौर पे फाउंडर्स और उसके जो को फाउंडर्स हैं वो बर्दाश्त ना करें, कि फील ना करें कि जी वी आर इन ट्रबल, और हम तो अपनी मेहनत का जो हमारा सिला है वो हमें नहीं उस तरीके से मिल पा रहा। तो उसके अंदर जो बहुत इमीडिएटेड रिसोर्सेज इस वक्त अवेलेबल हैं, जिसमें कामयाब जवान प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, जिसके अंदर 5% रेट्स के ऊपर जो है वो स्मॉल लोन्स जो है वो दिए गए हैं, और दे आर वेरी इजी, और उसको जो है ना वो इमीडिएटली एक नया स्टार्टअप जो है वो ले सकता है। और गवर्नमेंट को भी मैं आपको ये बताता चलूं, और अपने ऑल लिसनर्स को, कि इस वक्त गवर्नमेंट को ये एहसास हो गया है कि अपार्ट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ द मैक्रो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, और स्पेशली चूंकि मेरा बैकग्राउंड टेक्सटाइल से है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जो है वो 60% जो है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो है वो टेक्सटाइल से आ रही है, और इसकी बुनियादी वजह जो है वो एग्रीकल्चर बेस है, जिसके अंदर जो है वो हमारी कॉटन है, और हमारी कॉटन जो है दैट इज़ वेरी गुड इन क्वालिटी, और उसी की वजह से एक बहुत बड़ा हमारा सेक्टर है टेक्सटाइल का। तो उस टेक्सटाइल, अब गवर्नमेंट को ये विद इन लास्ट 20 to 30 ईयर्स ये एहसास हुआ है कि बड़ी कॉर्पोरेट तो एक खास इकोसिस्टम में ऑपरेट कर रही है, और उनके चैलेंजेस डिफरेंट हैं, उनकी फाइनेंशियल्स डिफरेंट हैं, उन्होंने इतने डीप पॉकेट्स बना लिए हैं कि दे कैन हैंडल द एक्सपोर्ट मार्केट्स, एंड दे कैन हैव द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। बट जो स्टार्टअप्स हैं, जो नए स्टार्टअप्स हैं, वो बड़ी की इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए जो है ना वो हैसियत रखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का रिसोर्स बन सकते हैं, और टेक्सटाइल इज वन ऑफ देम। बहुत सारे हमारे स्टार्टअप्स इस वक्त जो है वो इनोवेटिव प्रोडक्ट टेक्सटाइल की बना के एक्सपोर्ट तक जा रहे हैं, और जो ये इस वक्त B2C प्लेटफॉर्म्स अमेजोन की सूरत में, इट्से की सूरत में, और भी बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर हमारे स्मॉल स्टार्टअप्स जो हैं दे आर इवन डूइंग द एक्सपोर्ट्स। तो now coming back to the micro finance system available for the startups, और हमें एक बात और एक पॉइंट जहन में रखना पड़ेगा कि हमारी लो ट्रस्ट सोसाइटी है, जहाँ पे लोग एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्पेशली फाइनेंसिस के सिस्टम में जो है वो इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, तो आप बहुत आसानी से यू कैन नॉट फाइंड दैट इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल फॉर यू। और जीडीपी ग्रोथ लाइक बिटवीन 4 to 5 जिसके अंदर हम ऑपरेट कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि स्टार्टअप्स जो है वो ग्रो करें और अपने आइडियाज को जो है ना वो जनरेट कर सके। इसी तरीके से स्मेडा जो है वो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग्स एंड फाइनेंसेस, स्मॉल जो है ना वो सीड फंड अवेलेबल हैं। NICs आर डूइंग वंडरफुल जॉब इन पाकिस्तान स्पेशली। अब मैं जब देखता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त NICs जो है वो इस्टेब्लिश हो रही है, रिसेंटली NIC हैदराबाद को इस्टेब्लिश किया गया है, तो ये एक दिस इज अ वेरी गुड चांस फॉर स्टार्टअप्स, जो इससे पहले अवेलेबल नहीं था। जब हमने आज से साल 1.5 साल पहले 2 साल पहले जो है वो हम लोग या 3-4 साल पहले जब मैं नए स्टार्टअप से मिलता था, तो उनको ना ट्रेनिंग्स अवेलेबल थी, ना उनको फाइनेंसेस इतने इजीली अवेलेबल थे। और अब इस वक्त जो है वो आप NICs के साथ, क्योंकि स्टार्टअप्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि उनको इंफॉर्मेशन नहीं होती, दे कैन नॉट फाइंड राइट इंफॉर्मेशन कि वेयर दे कैन हैव गुड ट्रेनिंग, और वो कौन से एरियाज हैं फाइनेंस के जिसके अंदर वो वीक हैं, और वो कहाँ से जो है अपनी सीड मनी को जनरेट कर सकते हैं, वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को पॉलिश कर सकते हैं, अपनी पिच को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो इस वक्त NICs ने जो रोल प्ले किया है वो बहुत ज़बरदस्त रोल है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जितना ज़बरदस्त फीडबैक आ रहा है, स्टार्टअप्स अपने आप को रजिस्टर करा रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आप देखें, इफ़ यू टॉक अबाउट नेशनल बैंक, तो नेशनल बैंक भी जो है वो इस वक्त साफ स्कीम अवेलेबल है जिसके अंदर 9% के ऊपर जो है वो स्टार्टअप्स को इस वक्त फाइनेंसेस अवेलेबल है। और इफ यू टॉक अबाउट द रीफाइनेंसेस स्कीम फॉर वर्किंग कैपिटल, तो उसमें 6% पे अवेलेबल है, बट यू हैव टू प्रिपेयर अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन।
और कामयाब जवान प्रोग्राम का मैंने आपको बताया है कि वो जो है वो तकरीबन 1 मिलियन तक की फंडिंग जो है वो 3 to 5% रेट मार्कअप के ऊपर अवेलेबल है, विच इज वंडरफुल फॉर स्टार्टअप्स। तो आई थिंक जैसे जैसे ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक ये माइक्रो इकोनॉमिक स्टार्टअप्स का ग्रो कर रहा है, देर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ हैविंग सो मैनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, और एंजल इन्वेस्टमेंट्स एनआईसीज भी अरेंज कर रहे हैं। और अब तो इतने इंटरनेशनल फोरम्स, अब जैसे रिसेंटली दुबई के अंदर जो है वो इस वक्त समिट हुआ, बहुत सक्सेसफुल पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने वहां पे पार्टिसिपेट किया। पुर्तगाल के अंदर जो है वो नेक्स्ट मंथ होने के लिए जा रहा है। तो और ये इंटरनेट का एक्सेस है, एवरीबॉडी कैन फाइंड दीज अपॉर्चुनिटीज। Thank you so much, very much, Dr. Qasim. I think you need to mute yourself. Now, coming to you, Humaira. Humaira, is your network connection fine now? Yeah. Yes. We just lost you there for a back moment, on. actually. Yeah, okay, Yeah. that's great. So my third question would essentially be from you, and I would like you to talk a bit about the angel investor groups that we keep, hearing about. Like how to build such investor groups for the student-led startups or startups in general. If you could just talk a bit about, first the group itself, the groups themselves, and then, how to build those groups. Thank you. Sure. Thank you so much for giving me an opportunity to talk about it. There are a couple of things that I would like to enlighten over here, that we already have a very rich pool of institutes at the moment, where NICs, Science Park, and there are a couple of other institutes like Anum, Sameda, and SCCP. They're already having these infrastructures in place, and they are all working to build this pool of investments for the young startups. The role of the early stage startup funding pool is going to be friends, family, and you say fools, but then again, these are the ones who initially invest in you and trust you with the young startup idea. The role of angel investors is really vital, and I would believe that the Pakistani diaspora is playing a vital role in building this tool. The role of PEP Foundation is really highlighted over here, because PEP has done a great job bringing together the Pakistani diaspora, where people are investing with their funds, and they're trusting the Pakistani community to build up with solutions where they can come up with investments and returns as well. There are a number of venues where we can see that angel investors are pulling in. These are the profiles which come as angels, as it states. They are not disclosed at times, but then again, when we take in a pool for the verticals that people are working in, the EdTech community is really going vital with the recent investments in our very own startup, Orbit Ed. We have seen that people have come up with an investment, $500,000 is invested in our startup that is based at National Science and Technology Park. That is a very recent investment. And then again, with Peter Thiel investing in one of our startups, price that was $7.9 million. So that's not a small amount. These are seasoned entrepreneurs, and they have proved their validity with the markets at large. The startups which have the potential of growing at scale can prove their validity with the angel investors. And angel investors invest in startups with the drive of passion. At times, you can start building an investor pool by identifying the verticals that the angel investors are interested to invest in. Primarily, we can see that agri is one of the highlights where people are eager to invest. With the recent floods, we can see that there are people who are coming up with solutions like Quetta. They are working on flood, a clean drinking water solution. This is something which drives the direction for all the investment which is coming in terms of funds. Angel investors are really highlighting this part because they are eager to invest in some viable solutions where people can come up with and empower the low bottom of the pyramid, where you can say. So previously people used to do investment as charity, right? But now that they can see that there is a viability of having a turnout and an impact, angel investors are coming in with high returns and high investments. I can see there is a hand raise.
Yes, I saw that as well. Yes, Shayan. I think Shayan would like to add something to the discussion. Yes, Shayan. Yeah, sure. Absolutely. So yeah, I totally agree with Humaira in what she has said. There is a lot of role of people who are coming back from different other advanced ecosystems, and they have obviously made good savings over there and are more Mhm. accustomed to seeing startups rise. But what I'm also seeing, because I'm actively managing an angel syndicate, so to say, Teamup Angels. So what we see happening is a lot of people who have emerged from local startups, for example, Kareem or Airlift. These are referred to as Airlift Mafia or Kareem Mhm. Mafia, so to speak. And these are the people who have made their money in their early career from these startups, and therefore they are ready to believe in the startups, and they actively invest in other startups, especially in the early stage where the ticket size is small and they can reap some good kind of returns on their investment. So these are the trends that go along like hand to hand, in addition to the people who are coming back. This is just what I wanted to add. So basically, the Thank you, Shayan. Pakistan diaspora is already very rich in terms of Yeah. their experience and the fundings that they can bring in here. It always reflects with the impact that they are creating in return. So we can see that with the reports coming in, it's a very viable diaspora, along with the high intellect of our young youth, which is coming up with startups which are creating impacts. We can see that there are reports that it was just in 2022 that 83 startups were having a raise funding with $350 million. That's not a small amount. It's the pool of investors, be it angel investors, be it the platforms like we see platforms like Boost VC. The people have the potential to produce results. That's why people are trusting us with their money. So I can see that this is high time that we encourage our startups to try and test their viability and prove it to the world also. Thank you. Thank you so much, Mara. The stats certainly look very promising, and I'm sure the students who attended the session here would definitely be encouraged to, think about and building their own startups. Since we've been hearing a lot about the NICs and their proactive role in basically encouraging and supporting the startups, I would now like to move the conversation to Shayan and Mr. Nisar. Since you two belong to two different startups, NIC Islamabad and NIC Quetta, respectively, I would like for you to talk a bit about the availability of funding resources, and does it actually vary as per the startup's geographical location? Do the startups coming from, let's say, Quetta are at a certain disadvantage with respect to their perhaps location? If you could one by one talk a bit about that. Shayan, we can perhaps start from you, and then Mr. Sure. Nisar could. Absolutely. So I think there is a geographical concern, and it's not by design. It's through other proxies that this is happening. So what happens is naturally the rural areas of Pakistan, the tier 2, tier 3 cities of Pakistan, they do not see as many, for example, foreign qualified graduates coming back and starting their own businesses. Even if they want to start their own startup, they would probably be based somewhere in the bigger cities, KLI, rather than going back to some remote area and starting their business from there. So let me give you an example. There is a personal friend of mine. He started his career in Microsoft. Then he joined some other technology firms in US. And he has recently come back to Pakistan and started his own firm. And he's doing that out of Lahore rather than starting his business from a small city where we belong from, which is called Jam. So, and the same goes for me. If I start the business, I would start it probably from KLI and not really from Jam. So this is a natural tendency of anyone. They see the market, they see the accessibility and a lot of other things, availability of infrastructure and everything. And that naturally leads us towards the larger cities. And once the investors start coming in and they want to put their money in, they obviously conduct a lot of landscape study where these startups are coming from, where are the biggest markets located in the country. And they obviously want to tap into the markets that are leading and have the greatest potential. And again, they would be KLI. So it's not it's not by design that the investors are inclined towards the startups located in these cities, but this is
just happening because we do not have as many facilities in the smaller cities available. And I think the establishment of NICs in now tier 2 cities and even tier 1 cities like Quetta, I think it's absolutely essential and critical in playing its role in providing the infrastructure to the founders, upcoming founders, and then kind of eliminating the biases that exist in the system. Thank you, Shayan. Over to you, Mr. Nisar. Jay, so when you talk about NIC Quetta, we do not only work in Quetta, we work in all over Balochistan, right? Balochistan is not an easy province to work in. It's 45% of the whole country area-wise. Population is only 45%. So population is scattered all around. हमें पूरे बलूचिस्तान में जब हमने स्टार्ट में 2014 में एक यूनिवर्सिटी बेस्ड इंक्यूबेटर से स्टार्ट लिया, I remember I was literally running behind potential students to submit ideas to us 2014. So culture build करने में हमें काफी टाइम लगा. So even now we हमारी बहुत सारी energies अभी भी लग रही हैं on pre-incubation stages. जैसे Humaira is working with there at NSTP as well. We conduct comprehensive outreach all around Balochistan, in Khuzar, Lasbela, Gwadar, Turbat, Nuralai, Ju, even in Zarat and Pashin as well. So हमारा पर्पस ये है कि हम यहाँ पे entrepreneurial culture create करें सबसे पहले तो. अब उसका हमें advantage ये मिला कि we have been receiving 200 plus applications every 6 months now. We have reached out to millions of people digitally and physically. अब यहाँ पे बात आती है इन्वेस्टमेंट्स की, तो शायन ने थोड़ा बहुत कवर किया कि यस KLI पे फोकस बहुत ज़्यादा है इन्वेस्टर्स का, और एंड दैट्स अंडरस्टूड कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ डेफिनेटली हैं. NICs की एस्टेब्लिशमेंट से ये हुआ है कि now we can say that we have got startups ready for investment. They can compete with any startup all around the country. हमारे पास startups इस वक्त तमाम stages में हैं. We have got startups in pre-incubation, at the seed stage. We have got startups already for Series A funding as well. लेकिन जहाँ तक opportunities की बात for the startups, we've been striving to connect to various incubators. NIC Islamabad is kind enough to extend the support always. They call our best startups to their investor summits every 6 months, और हमारे startups वहाँ पे जाके participate करते भी हैं. Parvez was kind enough to do that, and Shayan too. So मेरे ख्याल में इस तरह की support से कि अगर तमाम NICs investor pools अपने एक दूसरे को available करते हैं, हम KLI से अपना focus हटा के बाकी cities पे भी ला सकते हैं, और बाकी cities में potential बहुत ज़्यादा है. Been through this ecosystem in all these tier 2 areas as well. Even तुर्बत में मुझे बहुत सारा potential नजर आया. तुर्बत में इंटरनेट की facility available नहीं है वहाँ पे students के पास. उसके बावजूद जो ideas मैंने वहाँ पे सुने, I was astonished to see that. एक दो बार मेरा वहाँ पे जाना हुआ है. So I think कि इस तरह की support के साथ कि अगर तमाम NICs अपने investor pools they make it available to all other NICs, जैसे कि NIC Islamabad is already doing it. इस तरह से हम बाकी cities पे भी अपना focus बढ़ा सकते हैं, और वहाँ से potential startups मिल सकते हैं जो कि definitely will play a huge role in the economic development of the country. Thank you very much, Mr. Nisar. Humaira, yes, you would like to add something? Yes, sure. I can see that we all agree that KLI is though the focus of everyone, because we have the stats and impact and everything is reflected through KLIs, right? Karachi, Lahore, and Islamabad are always on the front because of their reflection and because of their visibility. But this is something which is not just Pakistan. In fact, Pakistan is not the only country which is suffering from this highlights and all those things. People in rural areas have high potential. We all know about it. The challenges are about outreach, creating awareness, and having a mindset. Basically, entrepreneurial mindset lags in these areas where people are after jobs because they want stability. And we have to focus on these things as well, because until and unless we encourage them that you have a stable background, if you are an entrepreneur, we won't be able to pull this high end talent
into this entrepreneurial pool. I had a chance to visit the innovation district in China. This district is based in agricultural province Nanning. We were not. I could see that we were not the only ones who are having these challenges. The community in Nanning is a farmer community. What they do is that they agree that their high-end talent is moving out of Nanning to seek jobs, to create other pools of stability in their lifestyle. What they are doing is that they create one-day town hall every now and then in their innovation district, where they encourage people to come in and discuss their issues, sitting together with the investors, sitting together with the startups who can directly address and create some stable pool of employment for the people there. So basically, we need to go inside these areas ourselves and pull in the rural talent, bring in the people, show them the fertility of this pool. So everyone gets trusted with this talent pool, and they try to invest in them as well. So that was just my take on this thing, because we are not the only ones I can see. The high-end nations like China is also working to bring in people and to highlight their underrepresented areas. Thank you very much, Humaira. Dr. Qasim, I guess you would want to add something to the discussion as well. मैं हुमैरा और निसार साहब की बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा, और actually problems are on the ground. Borders, we have a trade with Iran, we have a very big border with large border with Afghanistan, उससे जो trade हो रही है, और जिस तरह के resources जो है वो इस वक्त बलूचिस्तान के पास स्पेशली मिनरल्स की फॉर्म में मौजूद है, तो स्टार्टअप्स इस वक्त इनके पास बहुत बड़ा चांस है. जैसे अभी शायान कह रहे थे कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में स्टार्टअप्स जो है वो ज़्यादातर हाउस्ड हैं, और ठीक है वहाँ पे इनको B2C की एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आबादी है, पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से दे हैव वेरी गुड चांस टू ग्रो. लेकिन इसमें जो चीज़ जो एक चांस बनता है उन लोगों के लिए जो बहुत दूर है, रूरल एरियाज में है, जैसे हुमैरा चाइना की मिसाल दे रही थी. आई हैव बीन इन चाइना फॉर कपल ऑफ ईयर्स. तो उन्होंने जो स्ट्रेटजी अपनाई है ग्रोथ के लिए वो यही है कि दे हैव डेवलप्ड डिफरेंट सेक्टर्स. फॉर एग्जांपल, अगर किसी एरिया के अंदर फ्रूट्स अवेलेबल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ज़ियारत है, और स्पेशली बलूचिस्तान कोयटा के इर्द गिर्द के इलाके हैं जहाँ पे वी हैव these areas have been referred as the fruit baskets of Pakistan. एप्पल है, चेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, आपकी number of fruits are there. अब अनफॉर्चुनेटली वी हैवंट डेवलप सप्लाई चेन के इन पेरिशेबल फ्रूट्स को किस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए, इनको ग्राउंड से, फील्ड से लेके हम इसको बड़ी मंडियों तक, कराची, लाहौर की मंडियों तक, या फिर इस्लामाबाद, या आपके जो है इवन एक्सपोर्ट लेवल तक इसको लेके जाए. तो व्हाट चाइना डिड इज, जो हुमैरा रेफर कर रही थी, कि उन्होंने 2-3 सिटीज को मिला के, छोटे छोटे शहरों को मिला के ये कहा है कि जी आप अपनी रिसोर्सेज जो आपके पास इंडिजिनस रिसोर्सेज मौजूद है, लोकल, द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड लोकलाइजेशन. और लोकलाइजेशन ये है कि आपकी अपनी प्रॉब्लम, उस एरिया की अपनी प्रॉब्लम, उस एरिया की अपनी इंडिजिनस रिसोर्सेज को अवेल करते हुए उसको ग्रो कराया जाए. दिस इज द सॉल्यूशन एंड दिस इज द वे द चाइना हैज वर्क. तो there is a lot of opportunities are there. और ऑन ग्राउंड अगर आप जाएं, सिंध के अंदर एग्रीकल्चर की जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको थोड़ी सी कॉटन की मिसाल दे दूं कि आप इससे अंदाजा लगाइएगा कि पाकिस्तान में कितना देयर इज अ चांसेस ऑफ, देयर आर चैलेंजेस वी हैव. पाकिस्तान वर्ल्ड एवरेज जो है पर एकड़ कॉटन की इस वक्त वर्ल्ड एवरेज जो है वो है 11 टन इन 1 एकड़, 11.
और जो आपका ऑस्ट्रेलिया है या यूएसए है या इसराइल है, दे आर मेकिंग 15 टन्स पर एकड़. और do you know what is the average for Pakistani yield? We have 6 tons per acre we produce. यानी वो काम जो हम सदियों से कर रहे हैं, इंडस डेल्टा के साथ, इंडस रिवर के साथ हम कॉटन को जो है वो बना रहे हैं, फ्रॉम सेंचुरीज उगा रहे हैं. और पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, जैसे मैंने पहले बताया, 60% ऑफ एक्सपोर्ट्स आर कमिंग फ्रॉम टेक्सटाइल सेक्टर. और हमारा ये हाल है कि वी आर मच बिलो फ्रॉम द एवरेज ऑफ वर्ल्ड एवरेज. तो मैं फिर रिपीट करूंगा, 11 टन पर एकड़ से लेके हम लोग जो है वो 6 टन्स पर एकड़ के ऊपर है. तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. टेक्नोलॉजी के अंदर चांसेस हैं, एग्रीकल्चर स्पेशली वी हैव टू, बिकॉज वी आर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री. हमें वो काम ऐसा, मैं अक्सर प्लेटफॉर्म्स पे ये कहता हूँ कि वो एक मिसाल दी जाती है उर्दू में कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया. कि हम लोग बहुत सारे वो काम करना चाह रहे हैं जो कि हम देखते हैं कि जी जो हाउ वर्ल्ड इज डूइंग. लेकिन द बॉटम लाइन इज दैट कि जी जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, वी नीड टू पॉलिश इट, वी नीड टू सॉल्व आवर लोकल प्रॉब्लम्स. एंड स्पेशली इस वक्त यूथ और स्टार्टअप्स के पास ये चांस है कि वो अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, प्रोविंस लेवल के ऊपर मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें. अब मैं एक लास्ट मिसाल दे के अपनी बात खत्म करूंगा. 48% जो है वो जो वूल है, वूल शीप्स वूल जो है ना, हैज बीन प्रोड्यूस इन बलूचिस्तान. क्योंकि यहाँ पे लैंड है, वी हैव लार्ज लैंड, तो उसके ऊपर जो है शीप्स को किया जाता है. लेकिन ये हालत है कि व्हेन वी सर्वेड द अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल वूल, तो उसको बर्न किया जा रहा है. व्हाट पीपल डू हियर इन पाकिस्तान, दे बर्न वूल. there is no value chain, developed value chain, कि एक सोने जैसी चीज को, एक गोल्ड जैसी प्रोडक्ट को हम लोग जला रहे हैं, then we are just wasting it. तो जैसे निसार साहब कह रहे थे और शायान साहब ने भी मेंशन किया कि बड़े शहरों की एक अपनी एडवांटेजेस है, लेकिन जो छोटे शहर हैं वहां पे स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं. they should focus on their local problems, और स्पेशली एग्रीकल्चर बेस्ड, मिनरल बेस्ड. और हमारा स्टार्टअप एक एनआईसी का स्टार्टअप है जिन्होंने माइंस और मिनरल्स की प्रॉब्लम को एड्रेस किया है. वूल के ऊपर हमारा स्टार्टअप है जो कि वूल की वैल्यू चेन को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है. व्हाट वी नीड इज सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड एक अच्छे इन्वेस्टमेंट चैनल्स हो जैसे अब डेवलप हो रहे हैं. तो मुझे यकीन है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स इंशाल्लाह पाकिस्तान में ग्रो करेंगे. और we need small startups but multiple successful startups which can help to bring more foreign exchange to Pakistan. Thank you very much, Dr. Qasim. Now, Shayan and Mr. Nisar, considering the current situation of global recession, how do you think is that going to impact the available funding and investment opportunities, and what's the trend been like? If you could talk about the impact of global recession briefly. So मेरे अपने experience में ना Pakistan is not that highly integrated into the startup ecosystem internationally. So हम जब बात करते हैं global recession की, it's hitting the West very bad. So for example, you would see that the startup financing in North America and in Europe has totally dried up. People have brilliant ideas, brilliant startups, and they are not getting their hands on the money now. And this is especially shocking for them because Silicon Valley used to be a place where if you had an idea, people would just put there. It was a very high trust market. If you have, you ask for $5 million just for the R&D and you haven't even built enough traction, they will be able to give you that money because there was so much support available to these startups, so much precedence available to these startups that you would bet on their success. That is not happening now. But fortunately for us, we are located in a region
which is very close in proximity to Middle East. Now, what has happened globally is during this time, while the world is going through the recession and financial downturn, this area was making a lot of money because of their oil reserves. The oil prices went up, and everybody in the oil market had their hands filled with petrodollars. And since this price is now going downwards, what is happening is these people have taken out that money from the petrol market or oil market, and they are looking to diversify it now. And you can see that in the trends that are going on in, for example, Saudi Arabia or UAE, and you would see that the interest of their leaders is towards creating, for example, putting money into sustainable cities or alternative energies or startups and digitization. UAE is now becoming the hub of fintech. So you would see their trends moving towards digitization, believing more in the innovation and the startup culture. And this is bearing a very good kind of news for us because of our proximity. Obviously, these people are culturally more and even geographically closer to us than they are to the West. And therefore, it is a golden opportunity for anyone in Pakistan right now to come up with a product that they would understand, that they would want to probably expand into their own countries as well. And then they would be interested in putting their money into you as well. And for example, if you look at the last 5-6 weeks, I do not remember a week where a deal in Pakistani startup was not announced. So every now and then you get a news that, okay, some startup has gotten 1 million or 1.5 million or 2 million. Even there was an exit for a cloud company in Pakistan. They were bought by a company for $700 million. And that's more money, twice the money that we got in the ecosystem last year. It was 350 million. And now there is an exit of 700 million. So I think whereas the world is experiencing a slowdown and a recession, we are not seeing that sign, and that is a very good news for us. But what we need is more focus on making investment-related policies so that the people who are bringing in their money from outside, they feel safe to invest in Pakistan. They feel it convenient to invest in Pakistan. And remember, the money that comes in, when they make money on that, that has to go back to the origin as well. So we not only have to make policies that make it easy to bring in the money, we also have to guarantee channels through which they can take out the money, and that is how they will feel safe and confident in putting in the money in Pakistani startups. I see a lot of gap in this area, and that is why we are not seeing the target of $1 billion that was set at the start of this year being hit in the year. Over to you, Shayan. Yeah, sure. Yeah, so Shayan has spoken my heart out. I 100% मैं agree करता हूँ Shayan से कि apart from के वो startups जो China से they were dependent on their supply chains from China, कुछ वहाँ से अगर कुछ startups affect हुए हैं. Apart from that, it's a huge opportunity for investors in Pakistan now. हम बहुत ज़्यादा affect नहीं हुए हैं बिल्कुल भी. और उसके साथ साथ शायन ने जैसे जिक्र किया मिडिल ईस्ट का, हमें तो बल्कि अभी रिसेंटली टिका एज अ टर्किश रेगुलेटरी समथिंग लाइक दैट उन्होंने अप्रोच किया है. दे वांट टू कोलैबोरेट विद एनआईसीज, पर्टिकुलर एनआईसी क्वेटा. शायन नोज के हमें एक सऊदी बेस्ड इंक्यूबेटर्स ने भी हमें अप्रोच किया तमाम एनआईसीज को, एंड वी आई थिंक विल हैव अ मीटिंग टुडे कि वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम है उससे लिंक करें और यहाँ पे स्टार्टअप्स में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स करें. So that's a huge opportunity. मेरे ख्याल में शायन ने इसको बड़े अच्छे से आंसर किया. It's a huge opportunity for investors now. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अब ये चाहिए कि अब इस अपॉर्चुनिटी से कैसे फ़ायदा लिया जाए, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज कैसे बनाई जाए. इन्वेस्टर को बस ये ट्रस्ट चाहिए, ये बिलीव चाहिए कि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेंगी पाकिस्तान में. और एनआईसीज के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं मेरे ख्याल में, और इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बड़ा इजीली इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जा सकता है, and can take benefit out of that. Thank you so much, Han and Mr. Nisar. Now coming towards Humaira and Dr. Qasim.
We've talked about the global recession now coming towards our own country. We know the country has been hit by, worst of the floods. How do you think is that going to influence the investment opportunities available to local startups? And I would like you to particularly discuss the startups operating in the water and the agriculture sector. Do you think they have a higher chance of getting more investment and funding, perhaps? Humaira, if you could start the conversation, and Dr. Qasim would follow. Sure. So the thing is that previously, as Shayan and Nisar has mentioned, the global recession has hit everyone, right? And the thing that we are suffering is the global climatic changes now, right? So basically, world is moving towards climate friendly solutions, and we all know that we are going to face this hit now or tomorrow. We need to come up with solutions which are going to fill up this gap very quickly. Floods have created this gap, but it is also creating an opportunity for the startups to prove themselves that their solutions are going to have a viability or deployment in these areas. This is going to create a huge impact because we can see that the population that is affected by these floods and global climatic change is what should I say, is devastating. It's a huge area which is untapped, and we know that the infrastructure is not there. We have problems reaching out to people. The technology startups can bring in a lot of impact in this domain. We can see that there are startups who have been working on clean tech solutions like Park with I. We have a couple of agri-tech solutions which can deploy drone-based solutions which don't need an infrastructure on ground on land, but they can picture the whole area from drones, and this can be deployed. There's a huge market which can be addressed, and if invested well, we can see that the impact can be created as well. We have a couple of startups who are working on geolocation, and they're working with World Bank-based solutions. They are funded projects for the clean tech energies. And if I can name a few, we have GIS Plus, which is global geolocation solution, and they're working with World Bank to address the areas, and they're deploying their solutions there. You will be looking forward to hear good news from them very soon. And there is another startup which is working on drone-based solutions, which are deployed in areas where agriculture was rich before the floods, in fact, and they were monitoring the health of the crops. So certain solutions are there, and we hope that people are going to invest in them, and they're going to create some impact, bring a good investment pool over here. We should be identifying certain ecosystem verticals. If we want to highlight these areas, there are verticals which can be addressed. Couple of them can be SaaS-based startups which are working in agri-tech. We already know that e-commerce has been quite a pool of attraction for the investors previously with price, so we have seen that. But we should also look into logistics. One of our startups based in NSTP is working on logistics, and they're heavily doing this thing for the flood-affected areas. They are working in bringing in the supply chain for all the funds that are coming to Pakistan. Bilti is the name of the startup, Bilti Logistics. So they are working heavily with the NGOs, with the institutes who are bringing in the flood relief things, and they're reaching out to the affectees. So logistics, agri, clean technologies, all these sectors have high potential to bring in good investment pools when we look into the devastating situation of floods at the moment. Thank you, Humaira, and over to you, Dr. Qasim. Meanwhile, Ali has joined us, and Ali, I would also like you to add your 2 cents once Mr. Qasim is done answering the question. Over to you, Mr. Qasim. हुमैरा सजाद ने बहुत अच्छे तरीके से मेंशन कर दी है। देखिए, जितने बड़ा यूथ का इस वक्त पॉपुलेशन में हमारा कंट्रीब्यूशन है, the amount of youth we have, or with the spread of smartphones all across the Pakistan,
इतना बड़ा गैप है कि हमें, मैं थोड़ा सा शायान से डिसएग्री करूंगा कि जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है हमारे पास वो आई थिंक इट्स अ मिनिमम लेवल पे ये फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा। उसकी वजह ये है कि वी आर कैश इकोनॉमी, और गैप्स इतने बड़े हैं, इतने ह्यूज गैप्स हैं, जिसमें हमें हमें हमारे पास बहुत चांस है वर्क करने के लिए। एक दो मैं एग्जांपल्स दूंगा स्टार्टअप्स की, जैसे हुमैरा ने भी कुछ स्टार्टअप्स को मेंशन किया है जो कि स्पेशली एग्रीकल्चर, वाटर और ग्रीन इकोनॉमी पे और सस्टेनेबल इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। वन ऑफ द चैलेंज वी हैड हियर इन बलूचिस्तान के शीप्स जो है, वूल जिसकी मैं बात कर रहा था, वो पूरे बलूचिस्तान में फैली हुई है, और ये नोमैड्स स्टाइल के ग्रोअर्स हैं जो कि 50-30 शीप्स के साथ पूरे बलूचिस्तान के इलाकों में फैले हुए हैं। तो इनको आइडेंटिफाई करना और इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना कि हम इनसे शीप कलेक्ट कर, इनसे वूल कलेक्ट कर सकें। अच्छा, और मजेदार बात यह है कि चैलेंज ये है कि जो शीप की ऊपर से वूल उतारना है उसका सबका टाइम एक साथ नहीं है, यानी इट्स नॉट पॉसिबल कि आज जो 15 की 15 शीप्स हैं उनकी वूल ग्रो कर चुकी हो। तो सीजन बेस्ड है और स्कैटर्ड है। तो वन ऑफ आवर स्टार्टअप इज वर्किंग टू फ्रॉम यूजिंग द GIS, और वो उनको कोशिश कर रहे हैं कि हम जो बड़े हर्ड्स हैं बलूचिस्तान के अंदर, उनको विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट आइडेंटिफाई कर सकें कि वेयर दे आर लोकेटेड। तो हमें मालूम हो कि हमें हाउ टू एक्सेस देम, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी ज्यादा हो चुकी है कि यू कैन नॉट गो देयर एंड फाइंड कि जी वो तो यहाँ पे अब है नहीं मौजूद, दे हैव मूव्ड समवेयर। तो टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन्स, इनको साथ लेके अगर यूथ हमारी लोकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगी तो देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल, देयर इज अ ह्यूज एरियाज एंड गैप्स दैट कैन बी एड्रेस्ड। जो मिसाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले दी थी कॉटन की, कि 1 एकड़ के ऊपर वर्ल्ड एवरेज जो है वो 11 टन है, और डेवलप्ड कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, ये लोग जो है वो 15 टन तक ले रहे हैं, एंड व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग इज 6 टन। you can see the gap। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो ये है कि हमारी जो क्रॉप है उसके ऊपर जो है वो कॉटन क्रॉप एक ऐसी क्रॉप है जिसके ऊपर डिजीज का जो है वो जो कीड़ों मकोड़ों का अटैक है वो बहुत ज्यादा है। अब जब तक वो पता लगता है हमें कि किस एरिया के अंदर, किस एकड़ेज के अंदर जो है वो ये अटैक हो चुका है, तब तक वो बहुत ज्यादा डैमेज कर सकी होती है। तो वर्ल्ड इज यूजिंग ड्रोन्स कि उसको जो है वो कैमरों के जरिए से आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि किस एकड़ के ऊपर, किस जगह के ऊपर ये प्रॉब्लम है, कहाँ पे डिजीज का हमला हो चुका है, अर्ली डिटेक्शन हो जाए, और अर्ली डिटेक्शन के बाद आप बड़ी लोकलाइज्ड किस्म का स्प्रे करें, पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करें लोकलाइज्ड, और उसको वहीं पे एड्रेस करके उस बीमारी को खत्म कर दिया जाए। तो वी शुड फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर, हमारा बहुत स्कोप है। अच्छा जी, पानी और सैलाब के बारे में मैं आपको बताऊं, स्पेशली जिन स्टार्टअप्स के साथ हम लिंक में हैं, फ्लड ने बहुत बहुत बड़ी तबाही फैलाई है, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट इंटीरियर सिंध। बनाना की क्रॉप इस वक्त जो है वो तबाह हो चुकी है, और पानी अभी भी, चूंकि बनाना जो है वो उसकी फसल जो है वो बिल्कुल इंडस रिवर के साथ साथ लगी होती है, दरिया सिंध के साथ, क्योंकि इसको इट्स अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, और वहां पे पानी अभी भी खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से उनका जो है वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का इस वक्त नुकसान हुआ है, जो मैं पर्सनली स्टोरीज मुझे जो है ना वो आप पता लग रही है। और उसके बाद मैं एक और न्यूज ये शेयर करूं कि जब मेरी उनसे बात हुई कि यार आप लोगों की इतनी फसल तबाह हो चुकी है और आप क्या कर रहे हैं, तो वो मेरा फोन नहीं अटेंड कर रहे थे। मैंने कहा भाई तुमने 10 दिन मेरा फोन अटेंड नहीं किया। उसने कहा मैं 10 दिन से बीमार पड़ा हूँ मलेरिया के अंदर। तो गांव के गांव इस वक्त जो है वो आफ्टर फ्लड्स दे आर इन डिवास्टेटिंग स्टेजेस, और वो डेंगी मलेरिया इस वक्त इतना ज्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर। स्टार्टअप शुड फोकस ऑन द सॉल्विंग दोस प्रॉब्लम, उनको मेडिसिन पहुंचाना, उनका डेटा कलेक्ट होना, मॉनिटरिंग बहुत आसान हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो देयर आर मैनी एरियाज वेयर वी कैन फोकस, और स्टार्टअप्स आर देयर, वो सोच रहे हैं, यूथ बहुत ज्यादा अवेयर है और टेक्नोलॉजी को हमसे ज्यादा यूज कर रही है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे जनरेशन हमारे बाद की जनरेशन है, दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, द
तकरीबन वो जो है ना वो अपने 10 घंटे जो है वो मोबाइल पे गुजारते हैं। अब उसको, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उनको ट्रेन किया जाए, उनको फाइनेंशियल में हेल्प की जाए, उनको बुनियादी तौर पे मार्केट रिसर्च के बारे में बताया जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बताया जाए, प्रोटोटाइप टेस्टिंग्स के बारे में बताया जाए। तो you know, as NIC and SMID are you know, doing the wonderfully, they are, you know, trying to solve and help the youth. तो I think there is a बहुत हौसला अफजा रिजल्ट्स हैं और बहुत अच्छे चांसेस हैं कि स्टार्टअप्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं। Thank you very much, Dr. Qasim. Ali, do you echo the same thought? Do you have any examples with us to share, especially in terms of these startups working in the agriculture and the water sector? We have some startups, but just to give my 2 cents, ke issue kya hai and how do we address it? Initially, when you talk about investments, why would the startup, well, let's suppose, why would an investor invest in a startup? If the investor is creating, if the startup is creating value, if they're creating revenue, if they're generating some, let's suppose, returns. हमारे पास बड़ी एग्जांपल्स आई रिसेंटली, पता लगा कुछ स्टार्टअप्स माशाल्लाह बड़ी अच्छी फंडिंग एक्वायर की हुई थी, दे आर नाउ nowhere to be found. We have the likes of Airlift, then there was Yevo, then there was another startup that I can't name. I was part of their team. So again, why would an investor invest in your startup? Again, 2-3 things. My mentor Masood साहब अभी फैसलाबाद में खोल रहे हैं, हम उनको बड़ा तंग कर रहे थे आजकल के, सर क्या अपडेट है, एग्री में आप क्या करेंगे? तो they have their own ideas, लेकिन they like जी there series of 7 questions that an investor would ask, and if you can give them the right reply, they would be willing to invest. Issue कहाँ आता है? What should the government do? Again, we are operating in silos. We have been always operating in silos. You talk about a basic example, startup की definition with respect to State Bank is different, with respect to SMIDA is different, with respect to SECP is different. सब एक उस पे पॉइंट पे सेंट्रलाइज नहीं हुआ हुआ। ई तजारत पोर्टल जो है वो अलग ऑपरेट कर रहा है, अलग मिशन के साथ, अलग विजन। अगेन दे बोथ अलाइंड। स्मीडा का भी अपना एक कहते हैं कि जी उनके भी अपने मिशन हैं, दे अगेन मोस्ट ऑफ द मिशंस दे डू अलाइन। लेकिन एट द एंड व्हाई वुड someone invest in a startup जो कि let's, and plus we have very good examples. We have someone वो अगेन ड्रोन टेक के अंदर कोई काम कर रहा है, कोई एजुकेशन में काम कर रहा है, कोई इमर्सिव टेक्नोलॉजी के अंदर काम कर रहा है। इमर्सिव टेक्नोलॉजी इज द न्यू थिंग। आप रिमोटली एक जगह से दूसरी जगह पढ़ा सकते हैं। अभी बहुत सी बीमारियां आ रही हैं, लेट्स सपोज आई कांट नेम द कंट्री बिकॉज वी कांट नेम द कंट्री, राइट? यू ऑल गेट इट, मैं किस कंट्री की बात करें, बट दे क्रिएटेड अ $1 माइक्रोस्कोप, और वही चीज पाकिस्तान ने भी बना ली। $1 माइक्रोस्कोप, लेट्स सपोज 200 रुपए या 300 रुपए का एक माइक्रोस्कोप बन सकता है जो आइडेंटिफाई कर सकता है कि जी वेदर इस जो हम पानी पी रहे हैं इसमें टाइफाइड या ये जो भी चीज है या ब्लड सैंपल है उसमें कोई मलेरिया के या ऐसी कोई चीज आ रही है, कोई और बीमारी जो जाहिर बात है इतना फ्लड हुआ है उसमें से आ सकती है। स्टार्टअप इज देयर, नो वन टू सपोर्ट देम, एंड प्लस उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी हुई है। यू टॉक अबाउट वैल्यू चेन, यू टॉक अबाउट transportation. We have very good startups, one of the few prominent startups जो कि कार पूलिंग पे काम कर रहे हैं, और कार पूलिंग का मॉडल उनका जो एल्गो है माशाल्लाह से इतना अच्छा एल्गो रन कर रहा है। दे लाइक जी वी कैन इम्प्लीमेंट इट इन दी इफेक्टिव जो इफेक्टेड एरियाज हैं, इफेक्टिव की हेल्प कर सकते हैं, जहां हम डाटा कलेक्ट करके कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, हमें पूरा डाटा बना के ट्रांसपोर्टेशन रख सकते हैं, कॉस्ट हम नीचे कर सकते हैं। बट देन अगेन गवर्नमेंट की साइड से बहुत कम इस पे गौर किया जा रहा है। अभी उनकी गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज कुछ और हैं, लेकिन you talk about drone tech, a startup that was affiliated with us अभी graduate हो चुके हैं, they were working in drone tech। ये टिड्डी दल का जो fiasco मचा था उसमें they were again prominent startup जिन्होंने help की थी, again government की support थी। right now government के support and government के जो vision है थोड़ा सा किसी और तरफ है, कोई और तरफ वो कर रहे हैं। again वापस उसी सवाल पे आते हैं कि when you say कि you need to protect, sustain, स्केल एंड सर्व, तो 3 चीजें तो हो जाती हैं। जो स्केलिंग का एलिमेंट आता है जिसमें आप कहते हैं इन्वेस्टर्स आएंगे एंड गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज होनी चाहिए। वी हैव येट टू सी देम। वी हैव सीन प्लैनेट एंड नदीम साहब जो हैं वो एक स्टार्टअप इन्वेस्ट करें, मल्टीपल स्टार्टअप इन्वेस्ट करें। हमारे पास कुछ शोज आना शुरू हो गए आइडिया करोड़ों का, जस्ट टू प्रमोट द एंटरप्रेन्योर माइंडसेट एंड क्रिएट द इकोसिस्टम जहां इन्वेस्टर आके वो कर सके। खत्म हो गए।
There are examples of good startups investment ली, and then they create bad examples for other startups or create a dent in the ecosystem कि investor को आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कुछ government के issues हैं, freelance की जो again कुछ figures तो उस पे आते हैं, official figures आते हैं, जो unofficial figure आते हैं कि जी पाकिस्तानी freelancers are the best rated on all platforms, लेकिन उनका पेमेंट मैकेनिज्म भी उनको कोई ऐसा बनाना पड़ता है, और उसी के दौरान एक जो हवाला हुंडी का सिस्टम है, ये समथिंग न्यू फॉर अस बाय द वे, एक हवाला हुंडी का सिस्टम भी बन गया है कि उसमें आप वहां से फ्रीलांसर्स कहते हैं, उसके साथ रजिस्टर होते हैं, वो कहते हैं इसको इतने पैसे दे दो, उसको इतने पैसे देते हैं, दे आर अर्निंग समथिंग आउट ऑफ इट, समथिंग इलीगल, बट देन अगेन गवर्नमेंट इसमें अपनी पॉलिसीज क्रिएट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेंगी, अगेन हम बहुत अच्छी बातें करेंगे लेकिन एंड रिजल्ट वही होगा. The whole we have examples of countries, कोरियन कंट्रीज हो गई, जापान हो गया, यूएस हो गया, सोमालिया हो गया, ठीक है, उन्होंने ऐसे नेशनल डिजास्टर्स के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए, एंड वी हैव वेरी गुड एग्जांपल्स. ड्यूरिंग कोविड वी ऑल शिफ्टेड, Zoom was nowhere, right? Zoom just आया और हर घर का नाम बन गया. व्हाट्सएप ने कितनी ज्यादा वो किया, नेटफ्लिक्स अगेन क्वाड्रुपलेड टाइम्स उन्होंने अपना स्केल अप किया है, Amazon ने इतना ज्यादा किया है. सो वी हैव वेरी गुड एग्जांपल. टेस्ला अगेन मैं बड़े बड़े ब्रांड के नाम ले रहा हूँ, लेकिन अगर रेप्लिकेट करके मॉडल रन कर सकते हैं, इट कैन बी एप्लीकेबल हियर. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में चल चुके हैं, हमारा भी थोड़ी सी पोजीशन थोड़ी ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट एंड प्लस एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाओ, एंड लेट अस नॉट ऑपरेट इन साइलोस, लेट अस कोलैबोरेट टुगेदर. ये भूल जाएं कि मेरा डिपार्टमेंट है तो मेरा डिपार्टमेंट अच्छा करेगा तो दूसरा डिपार्टमेंट भी ये कर रहा है तो कोई बात नहीं करे. अगर एक ही नेशनल फ्रंट पे जैसे होमलैंड क्रिएट हो सकता है, वैसे हम एक नेशनल फ्रंट पे कोई चीज क्रिएट कर लें, दैट वुड बी समथिंग जो कि वो हो सकता है. रिसेंटली हम एक उसमें गए हुए थे, नए डिबेटेड कि जी एनडीएमए को बंद करके 1122 को पूरी पावर दे देनी चाहिए. सो एवरीवन ऑब्जेक्टेड कि इसका दिमाग खराब हो गया, बट देन अगेन इफ यू go into the analysis कि जी what is NDMA doing and what is 1122 doing. So again NCOC, no NCOC, NDMA, no NDMA. If we don't provide our startups the solution creators, the disruptors, the right direction, right policies and right environment for them to operate, I don't think कोई आगे future नजर आ रहा है. I'm sorry मैं बहुत डार्क बात कर रहा हूँ, लेकिन it is that we as a university incubator see, and जो market के अंदर भी हम ऑपरेट करते हैं तो उसमें हम देखते हैं. Thank you, Ali, for these eye-opening remarks. Shayan has raised his hand, and so has Mr. Nisar. Shayan, if you could add your 2 cents to the discussion, then Mr. Nisar, you can take it from there. Anum, आपने मेरे इंट्रोडक्शन में बताया था कि आई एम रियली पैशनेट अबाउट क्लाइमेट टेक एंड क्लीन टेक, सो आई एम गोइंग टू टेक दैट इंट्रोडक्शन. सो मैं अभी पिछले कुछ दिनों से काम कर रहा हूँ एक तो ग्रीन इंडेक्स पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने में. उसके अलावा अभी 6th को आई वांटेड टू इनवाइट यू ऑल, मैंने अनूम को तो भेजा भी हुआ है इनवाइट का. 6th को हम लोग एक यहाँ पर डिनर भी कर रहे हैं, एंड वी वांट टू डिस्कस विद एवरीवन हु इज प्लेइंग सम पार्ट इन क्लाइमेट एक्शन और फ्लड रिलीफ. उनको ला के इकट्ठा करना, कंसोलिडेट करना, एंड देन टू फाइंड आउट हाउ यूजिंग इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी वी कैन एनेबल देम बेटर देयर जॉब. तो ये एक चीज़ है. लेकिन इन सारी चीज़ों से मुझे जो चीज़ सामने आ रही है ना, वो ये फर्स्ट ऑफ ऑल के दुनिया का सबसे बड़ा जो क्लाइमेट फंड है GCF के नाम से, ग्लोबल क्लाइमेट फंड, वो 3 साल से पाकिस्तान के लिए $40 मिलियन मुख्तस करके बैठा हुआ है, और उसको आज तक क्लेम करने में हम लोग कामयाब नहीं हुए. ठीक है, सो हम लोग जो है ना जितना मर्जी रोना रोते रहे, हमें जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको भी हम टैप नहीं कर पाते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो सारे स्टार्टअप्स नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स व्हेन दे कम अप, they try to make it a charity work. They do not try to build a business case out of it. They try to see that they are doing a favor to the world or Pakistan, and therefore someone owes something any favors ना. वो इस तरह से आगे कहते हैं कि मुझे आप डोनेशन दिला दें. नहीं, मैंने लोन तो लेना ही नहीं है. पूरी दुनिया के अंदर डेट फाइनेंसिंग इज एन एक्सेप्टेड norm, is an accepted form of financing for startups. Pakistan के अंदर founder would not even consider going towards financing through debt. So for example, Accelerate Prosperity is an excellent option. आप जो है वो अभी आपका काइबोर 16% चल रहा है,
plus a bank charges towards 2.5 to 3% on top of it. So अगर आप normally अपना personal loan लेने के लिए जाएंगे तो you would get an interest rate of somewhere around 19 to 20%. जबकि अगर startup accelerate prosperity से पैसा उठा रहा होगा तो they would only charge you 8%. अभी बहुत सारे ये पाकिस्तान नौजवान पाकिस्तान या इस तरह के और इनिशिएटिव्स हैं जो कि इजी उस पे लोन दे रहे हैं, बट कितने लोग जाते हैं उनसे लेने के लिए और फिर उनमें से कितने उसको वापस करवाते हैं, तो कंसिडरेशन बड़ी लो है. सो हमारे जो क्लाइमेट के स्टार्टअप्स हैं ना, उनको अपना बिजनेस केस बनाना बेहतर करना होगा. हमारे पास बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, टू नेम अ फ्यू. एल्गोरिदम है हमारे पास, दे आर डूइंग वंडरफुली वेल. यहाँ पे आने के बाद 4 मुल्कों में अपनी सर्विसेज फैला चुके हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर काम कर रहे हैं. व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, पाकिस्तान में ज्यादातर स्टार्टअप्स जब क्लाइमेट टेक के अंदर या क्लीन टेक के अंदर आते हैं, दे आर वर्किंग ऑन अ मिटिगेटिंग सोल्यूशन. पाकिस्तान की प्रॉब्लम मिटिगेशन है ही नहीं. पाकिस्तान तो सिर्फ और सिर्फ 0.5% या इससे लेस कंट्रीब्यूट कर रहा है टूवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज. तो आपका प्रॉब्लम मिटिगेशन तो है ही नहीं, आपका प्रॉब्लम है अडॉप्टेबिलिटी और दूसरा प्रिपेयर्डनेस. आप जब तक इन चीजों के अंदर स्टार्टअप्स क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप बिजनेस केस बना ही नहीं सकते. अब इस चीज पे जब आप आने लगते हैं कि प्रिपेयर्डनेस के अंदर या एडेप्टेशन के अंदर मैंने आगे अपना स्टार्टअप बनाना है, तो बहुत ही टफ टाइम मिलता है आपको टू क्रिएट अ बिजनेस केस आउट ऑफ द सॉल्यूशंस. ठीक है, अच्छा फिर चले हम कहते हैं कि अगर आपने मिटिगेशन का भी आपने बनाया ना, तो मिटिगेशन इज नॉट अ पाकिस्तान प्रॉब्लम, इट इज अ प्रॉब्लम दैट दी developed countries or developed economies are facing, so it has to be exported. तो फिर हम क्या ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि एक्सपोर्ट रेडी है, हम उसको बनाते हैं लोकल ऑडियंस के लिए, एंड देन वी somehow magically expect कि हमारा ये प्रोडक्ट जो है वो गवर्नमेंट भी इसको पैसे लगाएगी और इन्वेस्टर भी इसमें पैसे लगाएगा, जबकि जो आपने टारगेट ऑडियंस उसकी सिलेक्ट की है वो बिल्कुल गलत है. तो दीज आर द थिंग्स. और फिर एक और भी चीज हो रही थी कि एनआईसीज से पहले, एनआईसीज को ना लोग ये देखते थे कि शायद ये सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए एनआईसीज बने हुए हैं, जबकि अगर हम कोई इम्पैक्ट प्रोडक्ट लेके आ रही हैं जिस तरह के क्लाइमेट टेक या क्लीन टेक की, तो प्रॉब्ली वी कांट गो. हमें ना जब तक वो नाम के अंदर एक्सेलरेटर के या इंक्यूबेटर के नाम के अंदर नहीं आ जाएगा कि वी आर फॉर ग्रीन सॉल्यूशंस या फिर वी आर फॉर इम्पैक्ट सॉल्यूशंस, तब तक वो आप आके आपसे रुजू ही नहीं करेंगे. तो वो जाके आपको एक्यूमेन के अंदर 1-2 लोग अच्छे जो है वो मिल जाते थे, या और कोई अगर स्पेशलाइज्ड इंक्यूबेटर है उनके अंदर मिल जाते थे. हमारी तरफ तो कोई आता ही नहीं था. सो दीज वर द प्रॉब्लम्स आई सी के जो हर आफत होती है ना, दिस इज अ नेचुरल डिजास्टर ऑफ अनमैच्ड स्केल एंड द डेवास्टेशन इज ह्यूज. कराची से लेके और मतलब खैबर पख्तूनख्वा तक हर किसी को ये इम्पैक्ट फील हुआ है, एंड स्पेशली सिंध और बलूचिस्तान आर द वर्स्ट एक्सपेक्टेड. And just the human tragedy that has happened is unmatched. और मैं इसको डाउन प्ले करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर किस्म की आफत के अंदर ना एक अच्छी चीज भी होती है कि शायद वो हमें रियलाइजेशन भी आती है और हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर एंटरप्रेन्योर्स लेके आती है. वो रियलाइजेशन ये है कि नाउ मोर एंड मोर, नॉट जस्ट द GCF, but there are more people coming in with money. They are ready to commit that money to the startups who are working on the impact side, especially the climate tech and the clean tech. So उन्होंने वो doors open कर दी हैं. One challenge here is this might be a short-lived trend. So अभी हमें नजर आ रहा है कि एक रियलाइजेशन आई हुई है, 1.5 साल तक जब तक ये रेस्क्यू नहीं हो जाता है, रिलीफ ऑपरेशन रन नहीं हो जाता, तब तक ये शायद शोर शराबा होता रहेगा, लोगों को ये रियलाइजेशन भी रहेगी. बट इफ वी डोंट कैप इट राइट नाउ, तो फिर हमें जो है वो शायद दोबारा से उसी तरह का डाउन ट्रेंड नजर आएगा, फिर लोग अपने पैसे बाहर लेकर चले जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये वी शुड मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, एंड देन I think there is a need for sitting and consolidating, forget our egos and sit together, work on the products, consolidate these efforts, do not try to reinvent the wheel, and try to, जिस तरह से हुमैरा और क्या कहते हैं निसार साहब ने बात की थी ना कि हम लोग एक दूसरे के लिए अपने जो फाइनेंसिंग नेटवर्क्स हैं, हमारी नॉलेज नेटवर्क्स हैं, ये ओपन करें और एक दूसरे से बेनिफिट करें. तो हुमैरा ने इतने वंडरफुल स्टार्टअप्स की बातें की हैं. मैं आई वुड इनवाइट हर टू दिस डिनर दैट इज हैपनिंग ऑन 6th, एंड प्लीज आप अपने इन स्टार्टअप्स को भी लेके आइए. हम वहां पर उनसे समझना चाहेंगे कि पहले वो कर क्या रहे हैं, और फिर उनको हम इन फाइनेंसिंग ऑप्शंस की तरफ लेकर जाना चाहेंगे. और आई होप कि हम इससे बहुत कुछ अचीव कर सकें. Thank you. Would love to bring on board people who are doing the similar work. In fact, this should be a localized directory for everyone where anyone can check out
the thematic areas and who are working in those thematic areas, so we can tap into potential rightfully and time the impact. I really appreciate the opportunity, Shayan. I think this should be open for everyone because we know that there is a lot of potential around you, but those opportunities are not explored the way they should be. Thank एब्सोल्युटली you for और the मैंने invite इसी वजह again. से फेसबुक पे और लिंक्डइन पे ये इनवाइट डाला हुआ है प्लीज गो चेक एंड डेफिनेटली इफ यू आर इंटरेस्टेड जॉइन अस ऑन द डे Definitely. It's great to see some collaboration happening right here, right now. Nisar sir, you have a question? Then Dr. जी Qasim बस would मैं add अली comments अली and के then जो बेटर ट्रुथ्स हैं उस पर थोड़ा सा ऐड करूंगा। जी हम साइलोज में बिल्कुल काम कर रहे हैं और जिसका नतीजा ये है कि हम बहुत सारे लोगों ने एक दूसरे के जो इनिशिएटिव्स है उसको डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया है। उसने एनआईसी इज ऑलरेडी डूइंग समथिंग और मैं इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स नेम कर सकता हूँ जिन्होंने एग्जैक्टली वही काम शुरू कर दिया है उसी सेम रीजन्स में। सो डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। हमें एनआईसी के काम में गैप्स देखने चाहिए। जो भी लोग इनिशिएटिव्स प्लान करते हैं उसमें से गैप्स देखें और देखें कि कहाँ पे कौन सा काम एनआईसी नहीं कर रहा तो उसको करना चाहिए हमें। जैसे भी उन्होंने शायान ने भी बात की कि क्लाइमेट में द प्रॉब्लम इज नॉट मिटिगेशन, इट्स अडॉप्टेबिलिटी। अब ये प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कौन करे, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके बताएं ना, कोई इस पर भी काम करना शुरू करे। एनआईसी जो काम कर रहे हो तो ऑलरेडी कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर सेकेंड, अब अली ने बहुत अच्छी बात एक और भी कही कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हो गई हैं, अब स्टार्टअप्स का नामो निशान नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें इसके साथ साथ स्टार्टअप्स को एजुकेट करने की भी जरूरत है। हमारा हर स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट रेस करना चाहता है। आप बात करें इंटरव्यूज में तो हर बंदा, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर $1 मिलियन, राइट। स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे एनआईसी कोटा की अगर मैं बात करूँ, जब हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं तो पहला सवाल ये होता है एनआईसी हमें पैसे देगा या नहीं देगा। हाँ, तो वी नीड टू एजुकेट स्टार्टअप्स के किस स्टार्टअप को किस स्टेज पे पैसों की जरूरत है और क्या स्टार्टअप को जरूरत है भी फंड रेजिंग की या नहीं है स्टेज पे। तो सबसे पहले यही चीज एनआईसी उसको करनी चाहिए ताकि हम इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है एटलीस्ट उसको शटन ना करें, उसको और कॉन्फिडेंस को मजीद स्ट्रेंथन करने में मदद करें। और इसके अलावा शायन ने बड़ी अच्छी बात की कि हम वी शुड नॉट ट्राई टू रीइन्वेंट द व्हील। जो काम ऑलरेडी हो रहा है वी शुड अडॉप्ट दैट, और इसके अलावा हमें अपने नेटवर्क शेयर करने चाहिए ताकि हम आगे बढ़ें, आगे काम करें, तो हम बड़ा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्टअप्स की एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स। किस स्टार्टअप को किस स्टेज पे इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट रेस करने की जरूरत है, ताकि इन्वेस्ट अगर जस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट हम इसलिए रेस करें कि फॉर द सेक ऑफ के इन्वेस्टमेंट्स की अपनी फिक्र ज्यादा इंक्रीज करें तो उससे शॉर्ट टर्म तो ठीक है कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, लेकिन लॉन्गर रन में पाकिस्तान की इस इकोसिस्टम को नुकसान होगा। मैं बल्कि जैसे भी शायन ने इनवाइट किया, मैं सबको इनवाइट करना चाहूँगा क्वेटा में एज वेल। आप क्वेटा में आए और यहाँ पे एनएससी क्वेटा विजिट करें। एनएससी क्वेटा में आपको बहुत पोटेंशियल स्टार्टअप्स यहाँ पे भी मिलेंगे और बहुत सारे इनिशिएटिव्स यहाँ पे हैं जो कि प्लान किए जा सकते हैं। शायद एक और बात से भी मैं इत्तेफाक करूँगा कि फ्लड्स हैं, ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। अब क्योंकि बहुत सारा काम करने का गैप्स बहुत सारे आ गए, so we can work together on a lot of things. I'll invite everybody, including you, Anum, to visit NSC Quetta sometime in future and see कि हम कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। Thank you, Mr. Nisar. Over to you, Dr. Qasim, and then Ali, you can add your comments. Anum, on a lighter note, शायान ने 2 सेंट्स की नहीं बल्कि $1 बिलियन की बातें की हैं। और क्लाइमेट चेंज के लिए मैं सिर्फ 2 एग्जांपल्स कोट करूंगा। मैं ज़ाहिर है आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ इंक्यूबेशन, एनआईसी के और स्टार्टअप्स के एक्सपर्ट्स बैठे हुए यहाँ पे। मैं थोड़ी सी क्लाइमेट के ऊपर और ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन प्रोडक्ट्स की 2 मिसालें देना चाहता हूँ। पाकिस्तान की जो कॉटन है, वो कहीं की भी कॉटन जो होती है वो क्लाइमेट बेस क्वालिटी के, उसकी जो क्वालिटी है दैट्स ऑल depends on climate. Yani humidity, temperature, water, these are the things which make cotton a high quality cotton or a low quality cotton. Balochistan last 3-4 years से बलूचिस्तान की कॉटन की ऑर्गेनिक कॉटन की जो है ना वो इतनी जबरदस्त सेल्स और इतने जबरदस्त नंबर जनरेट हुए कि आई वाज सरप्राइज एंड आई वेंट इनटू द डेटा कि यार ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। I traveled across the बलूचिस्तान, खुजदार से लेके तुर्बत से लेके
जोब और फोर्ट बंडरू तक मैंने चारों तरफ जो है मतलब इसको ट्रैवल किया, और मैं आई वाज सरप्राइज्ड कि वो एरिया जो आज से 10 साल पहले बिल्कुल बंजर हो गए थे, दे वो ग्रीन हो गए और वहां पे कॉटन लगी हुई थी। तो मैं व्हेन आई मेट विद देम एंड मैंने जब कोशिश की कि इसका रीजन मालूम करूं, तो दे टोल्ड मी के द आंसर इज सोलर पावर वाटर पंप्स। यू नो कि सिर्फ बिजली ना होने की वजह से उनका जो एग्रीकल्चर का उनकी जो सलाहियतें थी या उनका जो सदियों से वो एग्रीकल्चर कर रहे थे वो खत्म हो गई थी बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर खत्म हो गया और फिर बिजली ना होने की वजह से वो निकाल नहीं पा रहे थे। तो सोलर गिव देम अ चांस कि जी वो एक सोलर लगा के अपना पानी नीचे से निकाल ले, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जो है और काफी पाकिस्तान के एरियाज में जो वाटर लेवल है वो नीचे चला गया। तो एक तो ये शायान की बात पे मुझे ये याद आया कि किस तरीके से एक रेवोल्यूशनराइज हो गई एक वापस एक कॉटन प्रोडक्शन बलूचिस्तान के उन एरियाज में जहां पे कॉटन खत्म हो गई थी। और द सेकंड पॉइंट, बलूचिस्तान में क्योंकि ह्यूमिडिटी कम है, इट्स अ ड्राई लैंड, और जो है उस खुश्की की वजह से जो है वो कॉटन की क्वालिटी वो हो रही है जो यूएसए की कॉटन की क्वालिटी और इजिप्शियन बेस्ट अमंग द बेस्ट कॉटन क्वालिटीज ऑफ द वर्ल्ड है। इजिप्शियन का जो कॉटन है वो सबसे अच्छी है उसकी क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से। तो बलूचिस्तान इज गिविंग अ फेवरेबल एनवायरनमेंट। सिमिलरली ये सेम रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो बलूचिस्तान के साथ साथ पोटोहार रीजन के साथ साथ बलूचिस्तान में आया है, एंड इट इज रिलेटेड विद ऑलिव। ऑलिव की प्रोडक्शन रिवाइव हो गई है और ऑलिव के लिए क्लाइमेट कंडीशंस बहुत फेवरेबल हैं और सोलर एनर्जी की वजह से दे हैव नाउ वाटर अवेलेबल विद देम, और ऑलिव की प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी हो रही है। तो जैसे शायान कह रहे थे कि ग्रीन क्लाइमेट बेस्ड स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा एक एरिया है जिसके अंदर हम लोग इस तरह की जो है वो इनसाइट्स को यूज कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज अपॉर्चुनिटी है और वहां पे कौन सा ऐसा स्टार्टअप है जो कि उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स कर सकता है। और ये दोनों चीजें आप देख लें कि ऑलिव ऑयल कितना जबरदस्त एक आइटम है, ऑर्गेनिक कॉटन कितनी जबरदस्त एक आइटम है। बड़े बड़े ब्रांड लाइक एडिडास, जारा, H&M, you name it, they are looking for organic cotton, and especially they are referring to the Balochistan organic cotton. That is the surprise thing. तो ये there is a huge gaps, और सिर्फ एक अच्छे जैसे कासिम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट को इस पे तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, दूसरी दो और चीजें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ स्टार्टअप्स को बड़ा परेशान करती हैं, वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बलूचिस्तान, जितना पीसफुल इन्वायरमेंट होता है स्टार्टअप्स ग्रो करते हैं। एक 17 साल की 16 साल की लड़के को कोई खौफ नहीं होना चाहिए कि वो अपने स्टार्टअप्स को इजीली किसी खतरे के बगैर ग्रो करा सके। उसको कोई पुलिस का डर नहीं होना चाहिए, एफबीआर का डर नहीं होना चाहिए, उसको ग्राउंड्स पे किसी किस्म के जिम्मेदारों का, वडेरों का डर नहीं होना चाहिए। हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हमें पता है कि एक एनआईसी के ठंडे ऑफिस में बैठ के बात करने का की जो है ना वो प्रॉब्लम्स डिफरेंट है। You see the problems in a different angle, and when you go into the ground. अब एक लास्ट और मैं एग्जांपल दे के अपनी बात बंद करूं, मतलब ये मैं अपना आर्गुमेंट खत्म करूंगा। आई वाज ट्रैवलिंग टू शंघाई और मेरे साथ एक जो है ना वो टेक्सटाइल के ट्रेडर्स वो कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, भाई क्या हाल हवाल है आपके बिजनेस का, स्टार्टअप का क्या हाल हवाल है? तो उन्होंने कहा कि यार बहुत बुरा हाल है। तो मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि वो कपड़ा जो मैं कराची पोर्ट से मंगवाता हूँ, वो आर्टिकल्स मंगवाता हूँ, स्पेशल आर्टिकल्स जिसपे मैं टैक्स पे करता हूँ, तो मेरी सारी जो कैलकुलेशंस है वो आउट हो जाती है जब बॉर्डर से स्मगल्ड कपड़ा मेरे मुकाबले में आ जाता है जो हाफ कीमत में मार्केट में मिल रहा होता है। यानी डूइंग बिजनेस लीगली with all paying all taxes and everything, वो आपकी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता जब आप अलाउ करते हैं स्मगलिंग को, और इस तरह की क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग होगी और आपकी वो चीज जो है वो आपको पता है ₹1 के फर्क से यू आर आउट इन द मार्केट। तो स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन चाहिए फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवेयर, और इन 2-3 चीजों के गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। बजाय ये कि गवर्नमेंट उनको परेशान करे, उनको टैक्स फ्री करना चाहिए। कम से कम जो है
वो हमें इस पहले 5 सालों तक फॉर अ स्टार्टअप हमें ये फिक्र नहीं होना चाहिए कि जी मैंने किसी किस्म का जो है ना वो मैं इस FBR के चक्करों में मैं पढ़ूंगा और मुझे ये इस तरह की जो है ना वो टैक्स और फलाना फलाना करना पड़ना है। उनको ईज करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। Thank you, Dr. Qasim. Over to you, Ali. Thank you. Acha, I'll just summarize, and I agree with जो हमारे माशाल्लाह speakers हैं उनके साथ, very well versed and very well experienced. Acha, again, there was an old saying, "What's chaos for the fly is food for the spider." Whenever there's a chaos, there will always be an opportunity. But then again, opportunity होने के लिए आपके environment भी बहुत matter करता है. वेस्ट मैनेजमेंट में वी एंड दिस इज मतलब हमारे स्टार्टअप माशाल्लाह से एक तो वाटर पे काम कर रहे थे, तो दे वर कॉल्ड रसाई जो हैं वो कह रहे थे कि जी हमें पता लगना शुरू हो गया कि जो टैंकर माफिया बना हुआ है ये बहुत बड़ा माफिया है, या वाटर सप्लाई करना, घर के अंदर पानी सप्लाई करना वो बड़ा इशू है. सो DHA वन ऑफ दी वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड वेरी वेल सिक्योर एनवायरनमेंट है, सब कुछ है, उसके अंदर ऑपरेट कर रहे हैं और उनके घर गोलियां चलती हैं DHA के अंदर ही कि इस बिजनेस से आउट हो जाओ. तो दो अभी छोटे स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं, बट देन अगेन इट वाज समथिंग जो कि बड़ा अलार्मिंग था कि जी एक एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए. एंड आई एग्री विद सर कासिम कि जी गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट नहीं करती, हमारे पास माशाल्लाह से कुछ इंडस्ट्री के भी लीडर्स हैं जो कि सपोर्ट अगर करें, बैकिंग करें, तो गवर्नमेंट से भी बातें मनवा लेते हैं. क्लाइमेट चेंज की बात की, आई थिंक बैक इन आई थिंक इट वाज इधर मई और जून, WWF वालों ने हमें बुलाया हुआ था, किसी एक छोटा सेशन था, की नोट था, यूनिवर्सिटी इनक्यूबेटर्स कैसे रोल प्ले कर रहे हैं. बहरिया यूनिवर्सिटी अभी माशाल्लाह से मैरीटाइम साइंस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बना रही है कराची में, और गवादर पूरा रीजन को जो पाकिस्तान नेवी को होल्ड है तो उसको वो देख रहे हैं. तो अभी देयर वाज अ फंड, डच फंड फॉर क्लाइमेट डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज को देख रहे थे. ID इंडस डेल्टा रीजन के अंदर कुछ मेजर्स लाना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, उनमें स्टार्टअप की थीम्स सब कुछ डिफाइंड है. So I had the interaction of meeting someone from the Sindh government, and I asked him कि यार माशाल्लाह डच फंड इतना कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, और भी यूरोपियन कंट्रीज के बैंक्स हैं जो कि आ रहे हैं. तो आपका जो सिंध का जो आपका आता है सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड जो माशाल्लाह से है, जो स्टार्टअप्स को करता है, व्हाट इज द फंड डूइंग? दे सेड जी वो फंड को आपको पता ना, गवर्नमेंट का ये मसला है, तो वो मसला है, तो ये इश्यूज हैं, तो हम वो फंड सही तरह यूटिलाइज नहीं कर सकते. एवरी अगेन इट्स अ वेरी ग्रे एरिया इफ यू रिलाई ऑन द गवर्नमेंट. उनकी अपनी पॉलिसीज, उनके अपने कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं. इफ यू रिलाई कंप्लीटली ऑन द कॉर्पोरेट, उनके अपने गोल्स होते हैं. तो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनना चाहिए और होना चाहिए. और डिस्कशंस के थ्रू क्या पता हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं और कंटिन्यूस टॉक्स के बाद एक ना एक कोई ना कोई बात रेज हो जाए कि वी हैड सीन वेरी कहते हैं कि जी इट्स नॉट ओनली, आई नो इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट है, ये फ्लड्स आए, लेकिन हमने बाकी नेचुरल डिजास्टर्स भी देखे हैं. एंड वी हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग समथिंग एंड वी डिड नॉट. So we saw we seen floods, right? Back about 5-7 years ago दोबारा फ्लड्स आए थे, छोटे लेवल पे, लेकिन फ्लड्स आए थे, उसमें भी हम कुछ कर सकते थे. अर्थक्वेक्स आए थे, उसमें भी हम कुछ कर सकते थे, हमने कुछ नहीं किया. I saw German companies back in 2005-2006 का जो हमें हिट हुआ था. I saw German companies, German research based companies coming into Pakistan, और उन्होंने जो प्रोटोटाइप्स बनाए थे टू एक्सरे विजन, टू सी थ्रू वॉल्स, और वो हार्ट बीट मॉनिटर करना है, और वो आपके जो हीट के जो सिग्नल्स होते हैं उनको कैसे कैप्चर करना है, और फिर उनसे इमेज कैसे आइडेंटिफाई करनी, वो टेस्ट करने इधर आगे थे. सो दे हैड टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस. नेशनल ज्योग्राफिक के 2-3 स्टार्टअप्स थे जो कि इसी सिमिलर उस पे काम कर रहे थे, एनिमल प्रिवेंशन पे, एनिमल सिक्योरिटी पे, पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट? वो चीज आए, लेकिन instead of learning through them, learning from them, we did not do anything. Again, we have good potential. Starters के लिहाज से अभी शान भाई ने भी बात की, और जो निसार अहमद साहब है उन्होंने बात की कि जी we have starters, but then again हमारी orientation of the startups, awareness and education बहुत लैक करती है. हम यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, हमें ऐसे स्टार्टअप्स अप्रोच करते हैं जो कि इनिशियली कभी किसी ना किसी USAID SMEA ग्रांट भी जीत चुके हैं, GSMA की ग्रांट भी क्वालिफाई कर गए थे, 5-6 और ग्रांट्स, लेकिन देर मोर फोकस्ड. The only purpose of creating that particular startup was grants, was not to establish something, generate revenue, create value, expand, scale और आगे बढ़े.
majority of startups that we see and that we deal with ज़्यादातर ग्रांट फोकस हो गए हैं और वो ग्रांट लोन नहीं चाहिए लोन की बात बिल्कुल नहीं हो रही हमें वो ग्रांट के पैसे चाहिए जिसे हम यूज करें यूटिलाइज करें और फिर एक टाइम आए कि वो खत्म होंगे तो हम नेक्स्ट ग्रांट पे जाएं सो ग्रांट पे सर्वाइव करें हम उनको zombies भी कहते हैं सीरियल zombies भी कहते हैं कि यार आप ग्रांट पे सर्वाइव कर रहे हो ग्रांट नहीं मिलेगी तो आप बस इस तरह फिर रहोगे सो और दिस इज अलार्मिंगली ये बहुत बड़ा नंबर है एनआईसी की बात करते हैं हम अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें हम बाकी यूनिवर्सिटीज को देखते हैं उनसे हम थोड़ा कोलैबोरेट करते हैं वो भी बात करते हैं कि ये स्कोप थोड़ा चेंज होना चाहिए और अवेयरनेस कहाँ से बनेगी NICs के थ्रू यूनिवर्सिटी इंक्यूबेटर्स के थ्रू एंड सम प्राइवेट इंक्यूबेटर्स एंड देन गवर्नमेंट अगर इस पे इनिशिएटिव लेती नहीं आई अगेन लॉस्ट ऑल होप इन व्हाट आवर गवर्नमेंट डज और डज नॉट डू आई थिंक इट इज हाई टाइम दैट वी एज ए स्टेक होल्डर्स should collaborate combine hands and do something about it. Thank you very much, Ali. Over to you, Humaira. Thank you so much. I think this has been a very enlightening conversation overall. I was just recently going through the recent report, jahan pe GII report kal publish hui hai. I would like to give my input in that. Ki hum 99 se we have secured a position of 87, jahan pe Pakistan has created an impact world over, going global innovation index, and we are going to a good position over there. हमारे पास innovation input की जरा भी कमी नहीं है. We have serial zombies, we have incubation hoppers. We need to set the direction right, and this is, I think, the role of the institutes where NICs and startup community and the National Science Technology Park, where we come in. We should set the focus of these young, youthful minds, and this is something which can be done together. Consolidated effort should be put on. जहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास इनोवेशन इनपुट है और आप एक ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं कमिंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान व्हिच इज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री एंड द इकोनॉमी इज रियली इन नीड ऑफ बूमिंग एट द मोमेंट we don't lack the potential at all. We just lack the direction, the leadership probably. We have some good initiatives where Samida and NICs and STP, SSCP, we are all coming up with initiatives. We are all coming up to grow together. The only thing is that हमारी जो efforts हैं वो directionless at times हो जाती हैं. तो अली आपके साथ तो मैं यहाँ पर बिल्कुल agree करती हूँ. जहाँ पे हमें opportunities create करनी है, we also need to spread the word. जो काम NICs कर रहे हैं, जो काम NSTP कर रहे हैं. NSTP over here हम लोग जो है SEZ zone declare हो चुके हैं. And I would love to share the stats because 23 companies over here have been getting the tax rebate. And this can be utilized by other companies as well. Please do spread the word where the companies are in need to have a tax rebate. We are here to support them. Do look out for the opportunities which are flashed on our websites. We always go into the framework policy making, and we have been supporting the infrastructure with the institutes like ministries. Recently, we hosted a VC conference, and the summit is also a upcoming thing. We would look forward to hold hands with all the community partners, with all the representatives over here. And I think this could be really useful in the future as well. Thank you. Thank you, Anum. Thank you, Humaira. Now, I would just like to wrap up my set of questions, and in the end, and then we move on to the questions sent in by the attendees. So, in the end, I would like all of you to, answer this question individually. How can we create an air or an environment of collaboration? As you all mentioned, that collaboration is highly needed. And secondly, how can we create a level playing field for all the startups, regardless of their geographical location? If you all could just answer it very briefly so that we can move on to the questions sent in by our attendees. We can start with Humaira, then Shayan, Dr. Qasim, Mr. Nisar, and Ali. One by one, please. Thank you. So probably I got through your cheat sheet. I think I have already addressed a few things. The thing is that there can be a number of platforms that can be introduced, but unless we have policymakers in that thing, we won't be able to create the enforcement which is required by these government bodies or with these institutional heads. The prime reason I'm saying is that we always go through different
summits, different conferences where papers are published, where policies are drafted, but when it comes to enforcement, we lack those channels. We need to introduce consolidated frameworks, and we should work together to get them enforced, so we get to see some results in the future. Thank you. Thank you. Shayan, over to you. अच्छा, मैं दोनों क्वेश्चन आपकी एक एक करके आंसर करूंगा. क्रिएटिंग कोलैबोरेशन, आई थिंक इट्स जस्ट एज इजी एज व्हाट आई हैव डन ऑलरेडी. आप एक दूसरे के लिए ओपन हो, जस्ट बी एक्सेसिबल, and I believe in doing that. I think it's really important to be accessible to each other and believe that this cause that I'm working for is bigger than me, bigger than you, bigger than any of us. So once we do that, it becomes easy to collaborate with each other. Second is कि हम किस तरह से level playing field create कर सकते हैं. I think it would take a very long time and a commitment unlike anything we have had before. क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी काम करके देखा. अभी मैं एक अमेरिकन एक्सेलरेटर के साथ भी काम कर रहा हूँ. वहाँ पर भी जो इवन टीयर 2 सिटीज और स्टेट्स वगैरह है ना, वहाँ पर भी चैलेंजेस नजर आते हैं. हालांकि वो एडवांस्ड इकोनॉमीज है, उनको भी बड़ा मसला होता है. फॉर एग्जांपल सिडनी का स्टार्टअप हब जो है वो काफ़ी एडवांस्ड है और वहाँ पे फिनटेक इकोसिस्टम बहुत एडवांस्ड है. लेकिन अगर हम पर्थ में चले जाएं, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, कहीं और पे चले जाएं, तो वहाँ पे आपको कोई स्टार्टअप ही नजर नहीं आता. तो आपको 75% जो स्टार्टअप्स इमर्ज होते हुए नजर आते हैं ऑस्ट्रेलिया से, वो सिर्फ मेलबर्न और सिडनी से हो रहे होते हैं. सो दिस इज नॉट अ यूनिक चैलेंज फॉर पाकिस्तान, दिस इज फॉर एवरीवन. आई थिंक उसका तरीका यही होता है कि जिस तरह हमने अभी टीयर 2 सिटीज के अंदर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स का जाल बिछाना शुरू किया है. प्राइवेट जो इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स हैं, दे नीड टू टेक द लीड नाउ. वो भी आए और वो भी अपना काम शुरू करें. Necessarily, when I said कि don't reinvent the wheel, I did not mean to say कि हम लोग जो है वो बस छोड़ के बैठ जाएंगे, अच्छा NIC काम कर रहे हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हम अपनी अपनी जगह पे काम करें, लेकिन ये देखें कि यार अगर फॉर एग्जांपल इनका इन्वेस्टर नेटवर्क है, तो वो कोई ऐसी उनकी जायदाद नहीं है जो जिसको वो शेयर नहीं कर सकते दूसरों के साथ. फॉर एग्जांपल मेरे पास जो इन्वेस्टर नेटवर्क है, इफ यू वांट कि आपको कनेक्ट करना है किसी से, तो आई वुड बी हैप्पी, मोर देन हैप्पी टू मेक द इंट्रोडक्शन. जस्ट आस्क मी. तो ये चीजें हैं जहां पर हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और एक दूसरे को वो कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं. मैं तो एक्टिवली रीच आउट करता हूँ सारे के सारे NIC से. एंड अब मुझे ये ख्याल आ रहा है कि शायद मुझे डेफिनेटली मुझे जो है वो जो हमारे प्राइवेट इंक्यूबेटर्स, यूनिवर्सिटी बेस्ड इंक्यूबेटर्स हैं, इनको भी रीच आउट करना चाहिए जब भी हम NIS कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल. या अभी जिस तरह मैं दुबई जा रहा हूँ, जाइटेक्स जा रहा हूँ, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज होंगी. तो अगर आप लोगों के पास अच्छे स्टार्टअप्स हैं, आप उनको जो है वो मार्केट करना चाहते हैं, इन्वेस्टर से कनेक्ट कराना चाहते हैं, सेंड मी देयर डिटेल्स, सेंड मी देयर इन्वेस्टर ब्रीफ्स, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू एनीथिंग व्हिच आई कैन. थैंक यू शायन जी. निसार साहब, आप काइंडली अपने कमेंट्स दीजिए, देन डॉक्टर कासिम. जी बिल्कुल. मैं तो वही कहना चाहूँगा कि एक तो जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, जो उनको भी थोड़ा एजुकेट करने की ज़रूरत है. मेरे ख्याल में KLI के अलावा भी बाकी सिटीज़ में इसमें पोटेंशियल मौजूद है. NICs या यूनिवर्सिटी बेस्ड इंक्यूबेटर्स इतना काम कर चुके हैं कि उनके पास इन्वेस्टमेंट रेडी स्टार्टअप्स इस वक्त मौजूद हैं. नंबर 1. नंबर 2, हमें एक दूसरे के इन्वेस्टर पूल्स को अवेलेबल करना चाहिए. शायान ने बड़े अच्छे उसमें उसको एक्सप्लेन किया कि ये हमारी कोई ज़ाती जायदाद नहीं है, पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होगा, इट्स अ ग्रेटर कॉज, और हमें ये अवेलेबल करनी चाहिए. इस तरह के डायलॉग्स होने चाहिए. और मैं परवेज़ की अगेन एग्जांपल दूंगा. परवेज़ ने एक और भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था. परवेज़ इज द डायरेक्टर ऑफ NIC इस्लामाबाद. उन्होंने एक राउंड टेबल अरेंज की थी जिसमें उन्होंने इनवाइट किया था इन्वेस्टमेंट के हवाले से, हमें भी इनवाइट किया था. इस तरह की राउंड टेबल्स होनी चाहिए तमाम NICs को और तमाम यूनिवर्सिटी बेस्ड इंक्यूबेटर्स, जो भी अथॉरिटीज हैं, उनका फाउंडेशन कैन डू दैट. ये होनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे से डिस्कशंस करें, स्टार्टअप्स की सक्सेस स्टोरीज को शेयर करें. आई कैन नेम अ नंबर ऑफ स्टार्टअप्स. डॉक्टर कासिम बैठे हुए, वेरी पोटेंशियल स्टार्टअप, वेरी पोटेंशियल स्टार्टअप. ये इन्वेस्टमेंट रेडी स्टार्टअप है, इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है. इनकी इन्वेस्टर से मीटिंग्स भी हुई हैं. इस तरह की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज और भी हैं हमारे पास NIC क्वेटा के अंदर. तो मैं अगेन इस तरह की डायलॉग्स रेगुलरली होनी चाहिए हमारे, और मीटिंग्स होनी चाहिए, इन्वेस्टर पूल्स एक दूसरे का अवेलेबल होना चाहिए सबको. और इन्वेस्टर्स को भी ये बताने की जरूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है कि
के अलावा बाकी सिटीज़ में पोटेंशियल इस वक्त मौजूद है, उनसे भी बात की जा सकती है, इनको भी सुना जा सकता है। जी डॉक्टर कासिम। रिगार्डिंग नेटवर्किंग, शायान साहब ने और निसार साहब ने आई थिंक बहुत क्लियर कर दिया है कि इसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। लेकिन मैं जो चीज़ जिस पे एम्फसाइज करूँगा वो ये है कि स्टार्टअप्स इकोसिस्टम ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए तो निस्बतन नया है, लेकिन पूरी दुनिया इसकी इम्पोर्टेंस को जानती है कि किस तरीके से यूएस में और दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में स्टार्टअप्स ने पूरे कंट्री की इकॉनमी को बढ़ाया है और उनको अपने सस्टेनेबल फुटिंग के ऊपर जो है ना वो उनको खड़ा किया हुआ है। तो स्टार्टअप्स को हेल्प आउट करना एट एवरी लेवल, गवर्नमेंट लेवल, प्रोफेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, एनजीओज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब जब तक मिलके स्टार्टअप्स को हेल्प आउट नहीं करेंगे, हम एसडीजीज के गोल्स भी अचीव भी कर सकते हैं, चाहे वो पॉवर्टी एलिवेशन हो, चाहे वो क्लाइमेट रिलेटेड हो, चाहे वो वर्क रिलेटेड हो। हमारे यहाँ इस वक्त लास्ट 20 इयर्स के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर जो बहुत बड़ा था वो तो अपने पांवों पे खड़ा हुआ है, लेकिन मीडियम साइज और स्मॉल साइज इंडस्ट्रीज जो थी भी वो तबाह हो चुकी है। पावर लूम सेक्टर्स को मैं जानता हूँ, और जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स के सेक्टर थे, बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं वो तबाह हुए हैं। और उसकी एक वजह यही थी कि जो स्टार्टअप्स थे वो ग्रो नहीं उन्होंने किया, क्योंकि जाहिर है उनके लिए कोई इंक्यूबेशन, कोई सपोर्ट, कोई फेवरेबल पॉलिसीज नहीं थी, बल्कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इतनी प्रॉब्लम्स और हर्डल्स हैं। जैसे स्मगलिंग का मैंने आपको एक मिसाल दी, लॉ एंड ऑर्डर की मैंने आपको एक मिसाल दी, फाइनेंसेस की, एक्सेस टू फाइनेंस की आप लोग जानते हैं कि इश्यूज हैं। तो दीज इश्यूज शुड बी रिजॉल्व, और पाकिस्तान का फ्यूचर स्टार्टअप्स के साथ अटैच्ड है। ये आई थिंक गवर्नमेंट को अब समझ आ चुकी है। कमिंग ईयर्स आर आई एम वेरी होपफुल कि कमिंग ईयर्स के अंदर पॉलिसीज, जैसे हुमैरा कह रही थी कि इम्प्लीमेंटेशन इज द इशू, आई थिंक इसके बगैर कोई चाराकार नहीं। मैं आखिरी बात ये रिपीट करूंगा कि चाइना ने जिस मॉडल पे काम किया है, उसने लोकल इंडस्ट्री को, लोकल स्टार्टअप्स को, लोकल क्लस्टर्स को सपोर्ट करके वो दे रीच टू दैट पॉइंट कि आज वो यूएसए की इकोनॉमी को जो है ना वो ललकार रहे हैं, just because supporting the local manufacturing clusters and local startups. तो आई थिंक ये रियलाइजेशन अब है, और आई एम वेरी होपफुल कि इसको जो है ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर के और इम्प्लीमेंटेशन के जो चैलेंजेस हैं वो एड्रेस होंगे। हर बंदे को अपने लेवल पे, जैसे शयान कह रहे थे कि आई एम असेसेबल और मेरे से जो कुछ हो सकता है वो मैं करूं, इसी तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे अगर अप्रोच ये होगी कि वट एवर आई कैन डू फॉर द स्टार्टअप्स, मैं अपने हिस्से का जो है ना वो पार्ट प्ले करूं, तो आई थिंक वी कैन मूव ऑन। Thank you very much, Dr. Qasim. Over to you, Ali. अच्छा, हाउ डू वी कोलैबोरेट? हम चाय पे बुलाते हैं, हम हमेशा दोस्ती खात करते हैं, और स्माइल करके बात करते हैं। एंड आई नो वी हैव ऑलवेज बिलीव इन द फैक्ट कि इफ सिनर्जी इज क्रिएटेड देन वी सी द मल्टीप्लायर इफेक्ट। मैं एक छोटा सा केस बताना चाहूँगा। 2 years बैक USAID UNDP का एक प्रोग्राम था, FERP, फार्टा इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन प्रोग्राम, और बहुत से जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, दे अप्लाइड फॉर द प्रोग्राम। द मेन फोकस वाज टू help educate our talent in enterprise development, incubation, जो आपकी ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज हैं वो दें, और वहाँ से बिल्डअप कर सकें। क्या बिल्डअप कर सकें? एंटरप्रेन्योर्स बिल्डअप कर सकें, अपने बिजनेसेस बिल्डअप कर सकें भी। एंड प्लस वॉर जोन से रिहेबिलिटेशन एफर्ट चल रहा था और शुरू हो गया था, तो उसको फिर एक सही एंगल से लेके जाएं, इंस्टेड ऑफ देम बीइंग इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज जो कि एंटी स्टेट जाएं, लेट्स क्रिएट देम स्टेट बिल्डर्स और इकोनॉमी बिल्डर्स। सो वो एक्टिविटी रन हुई थी। उसके लिए वी कोलैबोरेटेड विद इस्लामिक यूनिवर्सिटी। नाउ इट्स वेरी एट टाइम्स सोचते हैं बड़ा मुश्किल है कि दो यूनिवर्सिटीज मिलके एक साथ कर रही हैं, और देयर इज बहरिया यूनिवर्सिटी एंड देन देयर इज इस्लामिक यूनिवर्सिटी। बट हमारे हमेशा इट्स ईदर मी और मेहर साहब, मेहर हसन साहब, शायद बहुत से लोग जानते भी हो, हमेशा बड़ा कोलैबोरेट मोड में चलते हैं। और हमने कोलैबोरेशन पे प्रोजेक्ट पिच किया, वी गॉट द प्रोजेक्ट,
2 years in a row, we ran the project, successfully completed, somewhere around 360 entrepreneurs trained, 180 को grants भी दिलवाई फिर, और फिर grant के थ्रू अपने businesses setup किए जिसमें से 56-57% success ratio था, and वो फिर एक economy builder बन गए, और सारी बात है livelihood improvement हो रही है at a small level, not at a very big level, but then again हमारे जो goals थे achieve हो गए थे. Collaboration में again मेरी point one that I raised was कि we can't work in silos. It is high time that we collaborate, we create a network. मैं हमेशा जब भी नाइमा जब वो विमेन चेम्बर्स के इवेंट बुला लेती है या कोई समाज चेम्बर्स के इवेंट बुलाते हैं, हम हर साल जाते हैं, हर साल अपनी शक्ल दिखाते हैं, हर साल मैं रेस करता हूँ और हर साल कहते हैं अली यही बात करेगा और मैं भी बात करता हूँ. आई थिंक वी कोलैबोरेट. ट्रस्ट मी, हमारा जो नेटवर्क क्रिएट हुआ था और माशाल्लाह से हम उस नेटवर्क को हमेशा बढ़ा रहे होते हैं. उसमें एक चीज़ हमने नोट की थी कि इंडस्ट्री में लोग काम करना चाहते हैं और आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं. बस हम लोगों ने आई डोंट नो, शायद अच्छी बात है बुरी बात है, वी ऑपरेट इन साइलोज. हर कोई ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी इगोइस्टिक, एंड प्लस मैं खुद कह रहा हूँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग माय ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि थोड़ी सी इगोइस्टिक नेचर हो सकती है या कोई उनकी भी अपनी सारी बात है, अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, बट इन ऑर्डर टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट एक स्टेट लेवल इम्पैक्ट होना चाहिए, एंड टू क्रिएट दैट पॉलिसी जब तक हम कोलैबोरेट नहीं करेंगे विद ओपन आर्म्स एंड ओपन हार्ट्स एंड अ बिग स्माइल ऑन आवर फेसेस, तब तक आई डोंट थिंक ये होगा. हमारी तो आइडियोलॉजी यही है कि यार अगर किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है, लेट्स इनवाइट देम और गो टू देम. सारे प्रोटोकॉल ब्रेक करें, जाएं, मिलें, एक दूसरे से बात करें, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, एंड सी हाउ कैन यू वर्क कोलैबोरेटिवली एंड जनरेट गुड आउटपुट. और हमने कुछ केसेस अब रिसेंटली मैम हुमैरा से भी हमारा इंटरेक्शन रहा है, आईसीएम ट्रेनिंग हो रही थी, उसमें भी इट वाज ऑल आवर नेटवर्क दैट वी रीच्ड आउट कि जी दिस इज व्हाट वी वांट टू डू और हम ये ट्रेनिंग कराना चाहते हैं. एंड दे अगेन मिस एंड अदर पार्टिसिपेंट्स, दे टुक आउट टाइम फ्रॉम द स्केड्यूल्स, दे केम एंड दे ऑनर्ड अस. सो बिकमिंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम और इंटरवेंशन था. तो अगेन अगर आप नेटवर्क नहीं क्रिएट करेंगे, दूसरे को ऑनर नहीं करेंगे, एक दूसरे से आराम से बैठ के दुख दर्द वाली बातें नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, रियलाइज नहीं करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल उसके बाद भी इफेक्टिवली इतना कुछ आगे होगा. सालों में ऑपरेट करें. Thank you, Ali. So this basically brings me to the end of my set of questions. I'll just ask a few questions that the audience, people from the audience have submitted. So I think this would could potentially be answered by Ali and Ms. Humaira. So Dr. Syed Abdul Majid from Pakistan Institute of Fashion Design is asking that how can we convince the graduating students to or for entrepreneurship? Ladies first. Okay. So basically, when we have summarized all the discussion, we were talking about the mindset. Basic thing is that you might need to go into the pool of potential entrepreneurs, talk to them, create awareness, do some outreach. The timing is really crucial over here. We do have seminars, we do talk about sessions, talk sessions भी होते हैं, seminars भी होते हैं, but by the time वो graduate करने वाले होते हैं students या फिर वो कर चुके होते हैं, we need to identify the right student community. This timing can be when they are selecting their final year projects. This can be made, this intervention can be done in the initial year when they are enrolled. So if you give them a little or instill a little seedling of this entrepreneurial germ, I'm sure that they are going to look into the opportunity as well. I'm also leading a young innovators program at National Science and Technology Park, where I was going through a research, and according to McKinsey, we have our nation is really youthful, right? And when we talk about the stats, the thing is that the next generation is honestly not interested in doing jobs. They will be job providers in the future. They will be doing something of their own. The only thing is that they need to know how to do it, right? And when we say that Pakistan is a youthful nation, we are the 4th largest Gen Z population. So I am full of hope that if you tap in the potential at the right time, you will see that the mindset will change and you will see results as well.
Thank you. Ali, do you echo the same thoughts or do you have something else to add? I completely agree. अच्छा मैं क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं सेम सेट इनिशिएटिव जिसमें टारगेटिंग यूथ एंड मैं यूथ की बात कर रहा हूँ एट वेरी अर्ली स्टेज सीड ऑर्गेनाइजेशन seed.org जो थी वो रन कर रही थी जिसमें क्लास 5 से क्लास 9 के बच्चों को एंटरप्राइज डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही थी, बिजनेस प्लान कैसे बनाने हैं, देन वी वर पिचिंग इट, डिफर्ड वाज सपोर्टिंग इट, ब्रिटिश हाई कमीशन उसमें इन्वॉल्व था, प्रिंस चार्ल्स ट्रस्ट, अभी तो किंग चार्ल्स हो गए लेकिन उस वक्त प्रिंस चार्ल्स ट्रस्ट से एक अमाउंट आती थी, सीड ग्रांट ऑफ 2 मिलियन से अगेन वेरी करता है, 2 मिलियन 3 मिलियन की सीड ग्रांट देते थे और बच्चे अपना बिजनेस करते थे. अगेन I believe this is when we got on board. हमने कहा कि जी we need to have very good startups and we need to create thematic areas. So if you're in a university and you don't have, let's suppose, an incubator, we can guide you, we can help you. But then again, my advice would be कि एक basic सा business plan competition कराएं, create success stories. The success stories would again एक success story सामने आना शुरू हो जाती है ना, तो it gives the other person hope. We again fashion designing की बात करें, we had someone जो कि लड़की थी, सालिया नाम था, BBA 5th semester में थी. She was very good in doodling. So Red Bull का एक इवेंट होता है, Red Bull वाले अली भाई जो है वो हम बुला लेते हैं कभी कभार, वो बेसमेंट चैलेंज था और उससे डूडलिंग के चैलेंजेस थे, तो हम चले आते हैं यार, नेटवर्क वाले लोग बुला रहे हैं. तो बहुत डूडल का था, Red Bull डूडलिंग कोई चैलेंज था. So we spotted her and we said, यार तुम तो बहरिया की हो. Yes, मैं बहरिया की. मैंने कहा you have this passion, you have this art, you have this skill. Why don't you, do something about it, create a business out of it? And then she said, okay. And then she started to create आपके जो बुक के कवर्स होते हैं और बीच में आप स्लाइडर्स डालते हैं, वो सब बनाना शुरू कर दिया. डूडल आर्ट बड़ा अच्छा प्यारा सा. तो लेकिन it did not work. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जरी बात है, आपको पिवट पे बताते हैं, पिवट थोड़ा सिखाया, वैलिडेशन स्कोर कार्ड सिखा दिया, एरिक राइस की थोड़ी थ्योरीज दिमाग में डाली, और करते करते पता लगता है कि जी शी गॉट, मतलब बेस्ड ऑन हर आर्ट वर्क शी गॉट दिस ऑर्डर जिसमें शी स्टार्टेड टू डूडल डिफरेंट डेनिम जैकेट्स, और उसके पीछे डिजाइन बनाते थे और पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाते थे. एंड उसने कस्टमर के लिए किए, और कस्टमर ने जाहिर बात है वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड. Now she charges $500 per jacket. She's based in Canada right now. Families are migrate कर गई. $500 per jacket to doodle उसके लिए. So again, Miss America, मैं 10,000% agree करता हूँ. Create that environment. Create success stories. And उन success stories को market करें. हमने जब FERP रन किया था और उसमें हमें जब हमें रिजल्ट्स आना शुरू हो गए और मार्केट होना शुरू हो गया, initially it was very difficult for us to get people from those communities onto this training platform or training intervention. But then again, success stories create hona shuru ho gayi, large number of people started to apply in. Create the environment, create कहते हैं call to action जैसे होता है, वैसे एक environment अगर create कर दी, people will come to you. एक और मैं जल्दी से एग्जांपल बता देता हूँ, I'm sorry I'm taking too much time. जब USAID SMEA ग्रांट आई थी, अगेन ग्रांट है, हमारे ज़्यादातर स्टार्टअप ग्रांट में बहुत बिलीव करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन जब ग्रांट आई थी उसमें वी गॉट ऑन बोर्ड उस्मान करमानी. उस्मान करमानी बाय द वे वाज अ बहरिया अलुमनाई, वेरी नाइस गाय. वी सेड कि उस्मान भाई वर्कशॉप करानी है बहरिया के अंदर. ही सेड व्हेन. ही नेवर सेड कि जी नहीं मैं ये नहीं करता, मैं इतने लोगों को ट्रेन करता हूँ, मैं ये होता. वी सेड व्हेन. तो वी सेड कि यार हमारा छोटा सा उस वक्त, हमारा माशाल्लाह से इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, एक छोटा सा इंक्यूबेटर होता था हमारा, हमने उधर कराना है. ही केम, वी इनवाइटेड ऑल द फैकल्टी. जो इग्नाइट के प्रोजेक्ट्स, नेशनल ICT R&D फंड उस वक्त होता था, उसके प्रोजेक्ट्स में उन्होंने फंडिंग ली हुई थी और प्रोजेक्ट कोई ना कोई कर रहे थे. ई लर्निंग था, अर्ली एज डिटेक्शन था, वेरियस प्रोजेक्ट्स. तो उसमें फैकल्टी भी आई हुई है, हमने ऑफिसर्स भी बुलाया हुआ है, हमने स्टूडेंट्स को बुलाया हुआ है, एंड कुछ बड़े एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास है जिनको हमने कुछ बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन के थ्रू रिक्रूट किया हुआ था. ओनली वन स्टार्टअप अप्लाइड, और वो इतनी जबरदस्त इनिशियल पहले राउंड चल रहे थे. एंड उस्मान भाई वो सेइंग कि यार इनकरेज करो कि लोग अप्लाई करें ताकि चांसेस हाईली लाइकली ज्यादा हैं. बताई बात है, पहली बार रन हुआ, दूसरी बार स्क्रूटनी ज्यादा हो जाएगी, तीसरी बार और ज्यादा हो जाएगी. सो वन स्टार्टअप अप्लाइड एंड द फनी थिंग इज दे गॉट द ग्रांट. एंड व्हेन दे गॉट द ग्रांट, इतनी ज्यादा हाइप मची कि नेक्स्ट टाइम जब हमने वर्कशॉप का बोला कि वी गॉट मोर देन 300 पीपल साइनिंग इन फॉर द वर्कशॉप. हमने कहा उसको ऑनलाइन कर देते, फिर इतना तो हम अकोमोडेट ही नहीं कर सकते.
So create those success stories, bank on them, and they would, again, a success story would reflect on your performance, right? People would come in, create the environment. यूनिवर्सिटी अंदर कियोस्क का कॉन्सेप्ट नहीं है. व्हेन आई वेंट टू यूके, वहां देखते हैं लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट लाइसेंस देती है उनको, सबवे के अंदर अंडरग्राउंड में लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं. क्रिएट दैट कॉन्सेप्ट हियर, हमने यूनिवर्सिटी के अंदर एम्बेड करा दिया. हमने कहा जी, इफ यू वांट टू सेल समथिंग, वैलिडेट समथिंग, आओ सेल करो, बेचो, पैसे कमाओ और यूनिवर्सिटी को पे करो. एक रेंट हमने रखा है साथ, यूनिवर्सिटी को ओनरशिप आना शुरू हो जाए. सो ये स्मॉल निटी-ग्रिटी स्टेप्स हैं. गेट द अप्रूवल फ्रॉम द मैनेजमेंट, स्टार्ट डूइंग दीस थिंग्स, ट्रस्ट मी, अच्छा रिजल्ट आएगा. Mr. Humaira, you raised your hand. Do you like to add something here? Yes. So the thing is that there are a couple of initiatives like Student Startup Business Challenge, which was introduced by Pet Foundation. We tapped into the final year students, and the scouting was done, introductions were made, and alhamdulillah, there were 2 startups which were funded after that, and both of them were working in, one was working in energy and the other one was in fintech. Powerwalk and fintech solution, FinTech, were the success stories of that. The thing is that still, I can see that the startups were applying at the idea stage. They were having a prototype readiness, but we instilled the idea of lean methodology. The thing is that this youth has high potential to create an impact and create an idea and validate it too. We need to give them some ground to do that validation without going into that dip of deep valley, because otherwise they are going to have this valley of death and they won't come up. We need to give them a conducive environment to test and trial as well. That was something I wanted to put in, and this initiative is really a high impact initiative by Pet Foundation, and hats off to you for running it. Thank you. Thank you, Humaira. So the next question is from Dr. Asher Ahmed of NED University of Engineering and Technology. And he asks, and please just feel free to answer if anyone would like to take up that question. Is it better to register as a company in FBR instead of being registered as a startup in SMEDA? If anyone of you would like to take that question, please feel free. So मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर स्मेडा जो है वो सिर्फ मीडियम, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को वो करती है. उनका तो मेरे ख्याल में स्टार्टअप्स के साथ ऐसा लेना देना नहीं है, क्योंकि उनकी अभी तक डेफिनेशंस वगैरह भी इस तरह की नहीं है ना, तो वो रिकग्नाइज नहीं करते हैं. और दूसरा ये कि रजिस्ट्रेशन जो है ना, वो कोई भी कंपनी हो बिजनेस के लिए आपने SECP से करानी है. दैट इज अ मस्ट. अगर आप उनके पास रजिस्टर्ड नहीं है तो आप बेशक जो है वो FBR तो अपन आपको लेगा ही नहीं, रजिस्टर ही नहीं करेगा जिस वक्त आप SECP से रजिस्टर्ड नहीं है. तो वो आप लाजमी रजिस्टर कराएं. और बाकी फिर आपके आगे आप जिससे काम पड़ता जाना है. फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं भी कोई असिस्टेंस मिल रही है स्मेडा से, तो आपको उनके साथ अगर रजिस्टर करने की जरूरत पड़ रही है तो उसके लिए करा लें. बट आई थिंक फंडामेंटल जो है वो तो कंप्लायंस के लिए SECP की और PR जाहिर बात है कंप्लायंस स्टेप्स वगैरह जो उसके लिए आपको चाहिए. जी मिस्टर सईद निसार, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे फिर? जी, इसमें से एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा. हमारे कुछ स्टार्टअप्स को हमने रजिस्टर कराया तो एक क्यूरी हमें बाद में ये आई कि आपने हमें रजिस्टर कराया और BR ने हमें तंग करना शुरू कर दिया है. हमें नोटिस आना शुरू हो गए. मुझे नोटिस की उन्होंने कॉपी भी भेजी, तो मैंने उनसे कहा कि बिकॉज यू हैव नाउ बिकम अ रजिस्टर्ड कंपनी, आपको अपना रिटर्न फाइल करना होगा. देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट. आप उनको बताएं कि आपकी इनकम अगर कोई है तो डिक्लेयर करें, नहीं है तो उनको बताएं कि मेरी कोई इनकम नहीं है. तो डोंट वरी अबाउट दैट. जो कंप्लायंस है वो तो आपको डेफिनेटली करना पड़ेगा, SECP में भी और FBR में भी. आप टाइम पे अपना रिटर्न फाइल करें. FBR की नोटिस का हरगिज ये मतलब नहीं कि वो आपको तंग करने लगे हैं. ये कंप्लायंस है, सबको हर पाकिस्तानी को करना होगा. तो ये भी एक पॉइंट इसमें मैं ऐड करना चाह रहा था. Thank you very much. Sabah Munir ने Virtual University Pakistan से पूछा था about the role of government in startup support. I think we've extensively talked about that. And then Adan Jafri from Ziauddin University asked about the avenues that investors look into before funding a startup. I think Ali also touched upon that topic. Then we have Ataullah Beg हमसे पूछा है, how can I become a tech-based entrepreneur? If any one of you would like to perhaps give some suggestions or tips in that regard.
टेक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? अच्छा, तो सबसे पहले तो इट वुड हेल्प कि अगर आपका टेक बैकग्राउंड हो। अगर नहीं भी है तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैंने सोशल साइंसेज के अंदर अपना अंडरग्रेड किया था और अपने करियर का आगाज एनजीओ से किया था, और फिर मैंने स्विच किया बिजनेस फील्ड के अंदर, अच्छा लगा, और फिर जाकर मास्टर्स भी कर लिया। तो देयर इज ऑलवेज अ चांस, और आजकल तो इतना आसान हो गया, देयर आर लाइक मिलियंस ऑफ कोर्सेज अवेलेबल लिटरली। और अगर आपने फ्री पढ़ना है तो फ्री पढ़ सकते हैं, अगर आपने पैसे दे के पढ़ना है तो पैसे दे के पढ़ सकते हैं। यू नीड टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ लर्नर यू। फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट अ गुड ऑनलाइन लर्नर, आई लर्न बेटर इन कम्युनिटी। सो आई नो दिस अबाउट माई सेल्फ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ऐसे कोर्सेज ट्राई नहीं करता जिसके अंदर मुझे अकेला बैठ के ऑनलाइन कोर्स करना है। तो इफ़ यू नो दिस अबाउट योर सेल्फ, फिर उस तरह के स्टडी स्ट्रीम्स को परस्यू करें। और वंस यू हैव लाइक जाके देखें कि टेक के अंदर बहुत सारे और जॉनर्स हैं ना। फॉर एग्जांपल, आप जो है वो डेवलपमेंट वाली साइड पे जाना चाह रहे हैं, आप फिनटेक वाली साइड पे जाना चाह रहे हैं, किस साइड पे जाना चाह रहे हैं, तो उस साइड के लिए फिर जाकर देखें कि आपको कौन कौन सी कैपेबिलिटीज करनी है। उनको पिन पॉइंट कर लेंगे तो फिर आपको आसानी होगी वो कोर्सेज सर्च करने में जो कि आपको चाहिए, अपने आप को अपस्किल करने में। एंड वंस यू हैव दैट, फिर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। Thank you, I'll Shayan. try to शान भाई, अगर इंफॉर्मेशन मैं ऐड कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जनाब। अच्छा, दोस्त अपना ना नेटवर्क क्रिएट करना शुरू करो एंड ट्राई टू गेट मेंटोर्स ऑन बोर्ड, टेक बेस्ड जो हो, ठीक है। अगेन स्लोली ग्रेजुअली हर चीज टेक की तरफ जा रही है। एंटरटेनमेंट की बात करते हैं टेक, हेल्थ की बात करते हैं टेक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी अब टेक साइड पे बहुत ज्यादा, इमर्सिव टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ हो रहा है। तो ट्राई टू बिल्ड अप अ टीम। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप टेक के अंदर इतने महारत हासिल करते हो। वी हैव द लाइक्स ऑफ हमारे मुर्तज़ा ज़ैदी साहब जो हैं, ठीक है, ही सेड कि जी आई ओन अ बिजनेस, अ टेक बेस्ड बिजनेस दैट आई know very little of, but I have individuals who are working with me who are pioneers in the said technology or domain. तो ट्राई टू गेट ऑन बोर्ड डोमेन एक्सपर्ट्स, तो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं। थोड़ा मार्केट ट्रेंड भी देखो, अपनी तरफ से देखो। अगर आपका पैशन, कहते हैं ना, पैशन, हॉबी, स्किल्स एंड डिजायर एंड जो जुनून और वो सब चीज नहीं होंगी तो फिर आप बेशक टेक कर लो या ब्लॉकचेन में चले जाओ या स्पेस टेक के अंदर चले जाओ, डीप स्पेस के अंदर डीप टेक में चले जाओ, कोई फायदा नहीं है। सो ट्राई टू जस्ट सी मार्केट इनसाइट्स कि जी क्या हो रहा है। सी भी इनसाइट्स हैं, बहुत सी और वेबसाइट्स हैं, आप उसमें देख सकते हो। यूट्यूब पे आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। यूट्यूब शॉर्ट्स आजकल बड़ा अच्छा हो रहा है, उस पर आप सब्सक्राइब करो, उस पर देखना शुरू कर दो इमर्जिंग टेक्स कौन सी आ रही हैं, एंड ट्राई टू गेट पीपल ऑन बोर्ड। एंड अगेन ऐसे जो हमारे इवेंट्स होते हैं जिसमें हम डिस्कशंस कर होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करो, जस्ट सी वेयर द न्यू ट्रेंड्स आर हेडिंग। Thank you so much, Annalie. Just two more questions to go. Mohammed Taimur Amjad from PF is asking how a person can grow from stage 1 kitchen income to stage 2 assets building with safest model of investment. If any of the panelists would like to answer that question. आप दोबारा से रिपीट कर सकती हैं क्वेश्चन? जी, so Mohammed Taimur Amjad PF से पूछ रहे हैं how a person can grow from stage 1, which is kitchen income, to stage 2 assets building with safest model of investment. अच्छा, इसमें ना एक बुक है, वो मैं आपको कहूँगा साइकोलॉजी ऑफ मनी। साइकोलॉजी ऑफ मनी ज़रूर पढ़ें, एक्सीलेंट बुक ऑन इन्वेस्टमेंट। और वो बड़े ना अच्छी एग्जांपल्स दे के आपको समझा रहा है कि व्हाई दीज प्रिंसिपल्स दैट दे आर आस्किंग यू टू डू, व्हाई दे आर एक्चुअली द वंस दैट वर्क। सो फॉर एग्जांपल, दुनिया के सक्सेसफुल तरीन जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें से वॉरेन बफे है। जब हम उनका पोर्टफोलियो देखते हैं तो we try to be like him with hundreds of billions of dollars at his in his portfolio. Lekin we forget that he started investing when he was just 16 and he has been investing ever since. So he has like 60 years on his back. तो वो ऐसा नहीं है कि he did not make bad investments. He was able to live with them for long enough to turn them into good investments. और वो खुद वॉरेन बफे कहते हैं अपने अल्फाज में कि I do not believe in timing for investment. I believe in giving time to investment. ना कि आप invest करें, उसको time दें, and it would turn into a good investment. So ये एक तो rule है कि आप एक
टाइम देने के लिए उसको रहें। और फिर क्योंकि आपकी और सारी पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो लोग होते हैं इनकी बड़ी एक लिमिटेड इनकम होती है। सो सेफ इन्वेस्टमेंट का तरीका ये होता है कि इन द स्टार्ट ऑफ योर इनकम पीरियड, जो भी आपका सैलरी साइकिल है या इनकम साइकिल है, उसके अंदर कोई अपना लिए ना एक सेफ अमाउंट रख लें कि दैट कुड बी 10% ऑफ योर इनकम और 5% ऑफ योर इनकम, जो कि आपने स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, इन चीज़ों में लगानी है और आप उनको भूल जाएंगे। दिस इज एज गुड एज दिस इनकम इज नॉट कमिंग इन फॉर यू। और दूसरा फिर 10% जो है वो रखें अपने रेनी डे के लिए, कि कोई अगर मुसीबत आ जाती है, खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसके लिए। सो ये 20% का नॉर्मली कुशन कहा जाता है कि 20% का आपका फंड हो जो सेविंग में जाए, उसमें से 10% इज योर इमरजेंसी फंड एंड 10% इज द वन दैट यू आर इन्वेस्टिंग। सो इस तरह से आपके जो बाकी के बहुत ज़्यादा एक हैवी इनकम है वो भी इफेक्ट नहीं हो रही है, कि मुझे इस तरह नहीं करना पड़ रहा कि मैं बहुत बड़ा एक रिस्क ले लूँ जो कि कल को मेरे लिए मुसीबत बन जाए और वबाल बन जाए। आप सेफ कुशन में भी रह रहे हैं। इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट कि अगर खुदा ना खास्ता कोई नुकसान होता है तो आप उसको बेयर भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप कॉन्स्टेंटली, क्योंकि वो बिल्ड करते रहेंगे ना, सो फॉर एग्जांपल स्टार्ट करें इस महीने से, अगर आप 5,000 इन्वेस्ट करना शुरू कर दें तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आपने 60,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए होंगे और उसके ऊपर जो भी ग्रोथ आ रही होगी। एंड जस्ट इमेजिन कि अगर आप 10 साल तक ये अमाउंट मुसलसल इन्वेस्ट करते रहें तो आपके पास जो है वो तकरीबन 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट में होंगे। और जो भी आपको ग्रोथ रेट मिल रहा हो ना, सो फॉर एग्जांपल अगर आपको 5% ग्रोथ रेट मिल रहा हो तो दैट मीन्स कि आप उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करें, 12.5 साल के अंदर आपकी वो इन्वेस्टमेंट डबल हो जाती है। सो ये नॉर्मली जो है ना वो रूल ऑफ थंब है, इसको इन्वेस्टमेंट्स का हम कहते हैं। तो दीज आर द मेथड्स जिनसे आप कर सकते हैं। एंड आई वुड एब्सोल्युटली एनकरेज एवरीवन टू रीड दिस बुक, साइकोलॉजी ऑफ मनी। I think if you could just pop that name into the chat box, everybody could copy. Thank you, Shayan. अगला क्वेश्चन हमारे पास मोहम्मद बिलाल खान फ्रॉम सकर IB यूनिवर्सिटी से पूछ रहे हैं, what are the reasons startups can't sustain in Pakistan? We have talked about these aspects here and there, but if someone could just list them like 1, 2, 3, if it's possible. Yes, please go ahead. अच्छा, हमने भी थोड़ी रिसर्च की थी एंड दिस रिसर्च इज बैक्ड बाय डाटा जो हमने स्टार्ट से रन किया था, बोथ एट Bahria एंड आउटसाइड Bahria, जो हमारे इनिशिएटिव से कुछ। So number one factor again global है, that is you try to identify the market need which isn't the market need. So आप हेलो इफेक्ट के अंदर आ जाते हो, आप कहते हो कि मार्केट नीड मेरे ख्याल से ये है, आप उसके लिए पूरा प्रोडक्ट बना देते हो, उसकी सर्विसेज डिजाइन कर लेते हो और पता लगता है मार्केट नीड नहीं है। सो a startup that cannot fulfill a market need was number one. There's no market need and you made a big startup out of it, you created a team. Number two is the right team. If you don't have the right team, trust me, आपका बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट हो, eventually and slowly and gradually it will fall and it will fail. Number three is timings. Coming into the market, right timing, hitting the niche, filling it, and उस पे काम करें। हमारे पास माशाल्लाह से एक स्टार्टअप है, हम रेवेन्यू सुनते हैं, हम थोड़ा वो जाते हैं। They're working in the linguistic domain. हमें नहीं पता था linguistic कितनी बड़ी मार्केट है। इंडिया में $6 बिलियन से बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान में you will hardly find one registered company that is providing linguistic services, quality linguistic services. वरना हम linguistic हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है, ये ट्रांसलेशन करा दी इंग्लिश से उर्दू, हम कहेंगे उसकी एप्लीकेशन किधर है, उसकी एप्लीकेशन सिर्फ उधर है जी, हम कभी कचेरी जा रहे हैं तो वहाँ से हमने ट्रांसलेट कर, एम्बेसी में ट्रांसलेट होगी। इट्स अ वेरी बिग मार्केट। उनके जब क्लाइंट बेस सुनते हैं, उनके क्लाइंट में फेसबुक भी आता है, स्पॉटिफाई भी आता है, स्नैपचैट भी आता है, बाइनेंस भी आता है, इनड्राइवर भी आता है। Anything that you see that is translated into local content, for example English or Urdu, other linguistics is doing it. उन्होंने simple क्या आइडियोलॉजी रखी, find a niche and fill it, but keeping these things in mind, market need satisfy हो रही नहीं हो रही, आपके पास right individuals हैं who support you in realizing that particular dream जो आपका है, and the timing में बहुत से startup मार खाते हैं, बड़ी कंपनीज मार खा जाती हैं तो startup बहुत छोटी चीज़। So these are the three things I believe. इसमें मैं ऐड करूंगा एक चीज़ इसमें और इम्पोर्टेंट है कि हमने स्टार्टअप करना है लेकिन अपना पैसा नहीं लगाना। अब शायन ने बड़ा अच्छा इसमें किया कि अपनी सेविंग्स आप करें और अपना पैसा लगाएं। आप अपना पैसा नहीं लगाएंगे तो आप इन्वेस्टर को कैसे समझाएंगे, कैसे बावर कराएंगे, आपको खुद बिलीव नहीं अपने आइडिया पे।
दूसरी बात ये कि हमें ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहिए इनिशियली, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अगर डिपेंडेंट रहें इन्वेस्टमेंट्स पे और हम ऑर्गेनिक ग्रोथ को बिल्कुल भी प्लान ना करें इन फ्यूचर, तो हमारे पास एग्जांपल्स ये लिफ्ट की है और ऐसी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, हम डूब जाते हैं। तो अगर आप इन दो चीज़ों पर भी थोड़ा सा फोकस करें तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्टार्टअप्स पे आई थिंक थोड़ा सा काम किया जा सकता है पाकिस्तान में। अच्छा, इफ अलाउड मैं छोटी सी बात कर सकता हूँ? Yes, please. अच्छा, मैं शयान भाई की बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ इन टर्म्स ऑफ लेट्स सपोज इफ यू हैव एन इन्वेस्टमेंट एंड वो आप इन्वेस्टमेंट रखते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ सेटिंग अप योर ओन स्टार्टअप हमेशा याद रखें कि जी अल्लाह ताला की तरफ से कि जी रिस्क RISK रिस्क में रिज़्क है। जब तक हाथ पाँव नहीं मारेंगे, वो कहते हैं टाई और कैमल, ट्रस्ट इन अल्लाह बट टाई और कैमल वाला कॉन्सेप्ट है। So अगर if you want to really start low, let's suppose with low investment and open up your business, I suggest get theory of actuation सारा सरबस्ती की हैं, ठीक है, माशाल्लाह बहुत लोग उस पे वेरी सक्सेसफुल मॉडल थ्योरी ऑफ एक्चुएशन को रन करें, उस पर देखना शुरू कर दें। जैसे भी शायान भाई ने कहा एयरप्राइज का लीन स्टार्टअप का जो है, अगेन वेरी गुड मॉडल्स, वेरी गुड टूल्स जिससे आप अपने मॉडल को ट्वीक कर सकते हैं, पिवट कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा पढ़ें, उनके बड़े बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। विद लो इनकम you can actually generate very good you can actually generate a business जो कि आपको बहुत अच्छे revenues and return देना शुरू कर देता है। इन्वेस्टमेंट वाइज यस, आपने अपनी इनकम का कुछ ना कुछ सेक्शन होता है जो कि आपने सेव करना है, इन्वेस्ट करना है फॉर योर फ्यूचर आउटलुक जो भी आपको होगा। Thank you, Ali and Mr. Nisar. Now, the last question is from Visal Ahmed of University of Peshawar. And Humaira, perhaps you can answer this question. He's asking about the impact of financial assistance on local scientific discoveries. Since you work in the National University of Science and Technology, perhaps you would be in a better position to answer this question. Otherwise, anyone from the panelists, please feel free to give your comments as well. Sure. So that's fine. So the thing is that it's really interesting to know that he was interested to see what's with the technology and how to go about it and bring it in the industries. Primarily, we lack a few checks and balances, which include the look into the intellectual property and technology transfers. People do develop in technologies and they want to go into the industry and commercialize it, but they lack the intellectual property rights and they don't file the intellectual properties such as they cannot benefit from the royalties the way they can. So probably they can look into these details and file and identify the IPs and copyrights that are linked with the technology that they are developing. This can give them a chance to scale their product beyond borders. So just look into this opportunity and do look into the process, how to go about it. I hope this addressed the answer to the question. Thank you very much, Humaira. So that also brings us to the end of the questions sent in by the audiences and essentially the end of our discussion today as well. Thank you very much to the attendees for their thoughtful questions. I really appreciate that. And to the panelists for the insightful responses, I really appreciate your time. I know the session was, we were aiming for an hour session, but it just went longer. But I think that's a good news because we had so much to unpack. And the session actually is being recorded and we'll later be uploading it on YouTube, Facebook, and LinkedIn. So the ones who could not attend the session could, always benefit from the answers and the discussion as well. I really look forward to conducting such sessions in the future as well. So we all could benefit from such valuable information. It's Allah Hafiz from me and have a great weekend, everyone. Any departing comments, any, final thoughts or anything you'd like to share? Thank you, Anum, Pep Foundation, for organizing this dialogue. मैंने ज़ाती तौर पे शायान से, अली से, उमैरा से and Dr. Qasim से बहुत कुछ सीखा. So it was a very, very enlightening experience for me as well. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Great connecting and great learning from all of you. Look forward to do it again. Thank you. And I would really encourage looking forward to other opportunities and stay connected. Yes, everybody, please stay connected. Everybody has popped in their LinkedIn profile links in the chat, so feel free to connect to them. And we look forward to more sessions in the future. Allah Hafiz, everyone, and have a great weekend. Thank you.